से मसलन अवॉइड कर, ठीक है, वो इस तरह ज़्यादा बुरा लगेगा, 2 बुरों में से एक सिलेक्ट करना है तो वो कम बुरा है, ठीक है। स्टैंड बाय 1 मिनट। Stand by everyone. 30 seconds to title. Stand by drone. Stand by cam 5. Cam 5 ये लाइट्स का अच्छा शॉट नहीं है, कोई दरख्त वाला दे दो तो अच्छा ज़्यादा है, ये छोड़ दो, कोई दरख्त वाला अच्छा शॉट दे दो। Stand by everyone. नहीं 6 रहने दे, आप लाइट के अगेंस्ट हैं तो वो अच्छा नहीं आ रहा, छोड़ दें। आप 5 पे है ना, ठीक है। 6 5 4 3 2 1 टाइटल ऑन। जवाब This is a beautiful stroke. Fish tee up for the center. Which smashed away by Imam Haq. ball offer to Imam Haq, and he is not going to let it go. Deep river line. Played right in the hands of Arslan Ash. और यहाँ का तमाम Light extension end up as the winners by 12 runs. Good morning from a very bright and sunny Rawalpindi Cricket Stadium. Barrier Town Champions Cup T20 match number 5 coming to you. Engro Dolphins versus UMT Markhors. Beautiful morning. Teams arrived nice and early. Engro Dolphins, Fahim Ashraf joining them, Umar Amin. After the defeat the other day, they will be looking to bounce back and put some points on the board. UMT Markhors, nice and relaxed and pretty calm and serene. This was the result of the last game, a very close one. 162 for 5 Allied Bank Stallions played 150 for 7 Nurpur Lions of Santalat. After his 100, he scored another 50. 2 wickets for Musa, Imam, Hassan Nawaz and Khushdil's effort with the bat weren't enough as they lost by 12 runs. UMT Markhors started their campaign in a winning style, and skipper Iftikhar Ahmed was at the forefront of that run chase. Really got off to a good start in the tournament. There was a bit of a tricky situation when he arrived, but he took the situation and controlled it and saw his team over the line. Well, conditions are gorgeous with the weather. Let's see how are the conditions in the middle. Salman Butt was there with the pitch report. Welcome to Rawalpindi, where it's bright and sunny. Another beautiful day and another exciting encounter that awaits between UMT Markhors and Engro Dolphins. And the pitch that we talk about every day, it's getting better.
It's been a good cricket pitch, and why I say that is if you walk to a length where the fast bowlers are mostly getting the success is the hard lengths. That is where we are at the moment. This is the area where the fast bowlers have been banging in and they've been getting results. And on the other hand, on this pitch, the spinners who have bowled the right channels, we saw yesterday, they were very effective. So it's about doing the basics right. The batters who have, batted the situation and also given themselves time have been very successful. So well done to the groundsmen for preparing such a good cricket pitch. Good cricket pitch, says Salman, but good time to say a very warm welcome alongside me, Ali Yunus. Very good morning, Ali. Yeah, it's a beautiful morning here in Rawalpindi. And Engro Dolphins just warming up, coming into this game after the defeat in the previous one. They were looking to make amends and start winning in this tournament. Although early days, Sarfraz Ahmed, the mentor of the team, he will be very keen and eager to start that winning campaign for them. It's good to see. Fahim Ashraf also back in the camp. They look quite easy, quite comfortable, relaxed. The moment this UMT Markhors side, Iftikhar Ahmed played a good inning himself, so that will give him a lot of confidence going into this game as a captain. As a captain, let's see what the two captains decide. Marina Iqbal is out there in the middle with the two captains. Another gorgeous day here to witness a cricket match, and I'm all set with the captains in the middle. I've got Fahim Ashraf representing Engro Dolphin, and UMT will be represented by Iftikhar Ahmed. We've got Nadeem Arshad who will be officiating this match. You've got the coin? Head. Heads is the call. Heads it is. Iftikhar, क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे और मुझे थोड़ा हल्का मॉइस्चर लग रहा है तो कोशिश करेंगे उससे फ़ायदा उठाएं। 2 दिन का गैप आया, ज़्यादा लंबा रेस्ट तो नहीं मिल गया एज अ टीम? क्या एक्टिविटीज़ करते रहे? नहीं, कल भी हमारा कैंप था और बॉलर ने सही ठीक ठाक बॉलिंग की है नेट में और मेरे ख्याल में तैयार है बॉलिंग के। और कोई चेंजेस आपकी साइड में? नहीं, सेम टीम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। फहीम, वेलकम बैक। पहले बात हुई थी, जो मैच हुआ था उसमें थोड़ा सा हमें नजर आया था कि डेप्थ बैटिंग में नहीं आई। आपके आने से जो है वो लगता है कि आपको डेप्थ बेहतर होगी? देखें जी, हमारी टीम ओवरऑल वैसे तो अच्छी है, लेकिन ये है कि जब आपके प्लेयर वापस आते हैं जिस पोजीशन के लिए आपने रखा होता है, तो जाहिर सी बात है कि टीम में जो एक एनर्जी वापस आती है तो आपका जो टीम का कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन सही बन जाता है। और ऑब्वियसली थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, लेकिन पावर प्ले T20 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में क्या प्लान है? देखें जी, पिंडी में अगर आप यहाँ पे स्पेशली अभी के जो मैचेस है, इसमें नया गेंद काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। इसमें हमारा यही है कि कम से कम विकटें दें, क्योंकि उसके बाद आप देखें कि पिंडी की पिच पे जब धूप लग जाती है तो बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि एक अच्छा टारगेट सेट करें। और क्या टारगेट आपके माइंड में है? ओवरऑल जैसा यहाँ पे चल रहा है 150 160, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि पहले तो यही माइंड में हो, लेकिन अगर हमारी विकटें हमारे हाथ में होती हैं तो कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। और आपके अलावा कोई चेंजेस? जी बिल्कुल, हमारी 4 चेंजिंग है। इखलाक आया है, ताहिर बेग आया, कासिम अकरम, मैं खुद। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। The news from the center is that UMT Markhors have won the toss and they have decided to bowl first. Win the toss, bowl first seems to be the order of the day here in this Pindi Stadium weather and pitch. Time for the action to begin. Both the umpires are coming to the middle. UMT Markhors in the huddle. Promises to be an exciting game, Ali. Markhor the victory, and Engro Dolphins will be looking to put some points on the board. Absolutely. And the interesting part is the changes that I'm looking forward for Engro Dolphins. This is a better balanced side than the previous one. They've strengthened their batting lineup with the likes of Fahim Ashraf coming in, Ikhlaq also coming in, Tahir Beg, the big dasher, Qasim Akram, the all-round cricketer. So this certainly looks like a better balanced side with Saibzada Farhan and Umar Amin giving them that experience. Winning combination retained by UMT Markhors, no changes. Iftikhar is in good nick. Fakhr Zaman, the big player, would like to get amongst the runs. Khwaja Nafay had a quiet one. He will look to make amends. So did Abdul Samad. And plenty of big names in UMT Markhors. They start out as favourites, in my opinion, but
This is a new game, new day. You have to be at your best. Sabzada Farhan has been in the headlines recently. He needs to perform and score some big runs for his Engro Dolphins side. Imran Javed officiating alongside Rana Muhammad Arshad. These are the two on-field umpires. I'm really looking forward. We just saw on the screen Mohammad Nawaz. It's been a while that we have seen him play at any level. So really looking forward to see how he performs. We know all about Sabzada Farhan. He's been in tremendous touch, especially at this level. Recently represented the national side. Look at those numbers. 128 the strike rate with an average of 32,395 runs. 109 being the best. Very talented, very attacking. Got the intent, Sabzada Farhan. And his partner, he's come into this game in place of young Horera. He's got that strike rate behind him, 124, 25 the average. Still early days, I would say 25 games. Highest of 66 for Mirza Tahir Beg. This man, Akif Javed, has looked very good the earlier part of the season. Coming back from injury now in this tournament. Got 4 overs under his belt in the previous game. 49 wickets. Nearing the milestone of 50 wickets in this format. Not overly attacking is skipper Iftikhar. Just the one slip. The umpire waiting for the clock to tick over before he calls play. Imran Javed officiating at the media center end. Left arm bowling over. Play. Play is the call. Goes past the outside edge immediately. That fuller length, that left arm over angle, leaving Sabzada Farhan caught in the crease. Not much of a footwork. Good start, Akif Javed. That's a brilliant start, I would say. On target. Going with the angle. Great length also. That's beautiful bowling. Beautiful start for Akif. And that's what the captain suggested, that early on that moisture will help the fast bowlers. According to Fahim Ashraf, new ball is the key as far as batting or the bowling is concerned. Pick of length, good bounce, but Sabzada Farhan comfortable. Yeah, Fahim Ashraf made a good point at the toss. Especially if you're batting first, you need to save your wickets, and that's what he said. If he's able to save these wickets on this Pindi pitch, which has got plenty of pace and bounce, and a little bit of early moisture that you talked about, 12 o'clock start, although it seems the afternoon start, but it's winter time in this part of the world, not very hot, so the wicket doesn't really bake until quite late in the afternoon. Start is important. Engro Dolphins. And pitches have been excellent throughout the tournament that we've witnessed so far. You have to grind. It's not that runs will come easy. Yes, it has a little bit of extra bounce that helps the fast bowlers. But it's good that batters need to grind out. That is why 160 runs, Fahim Ashraf said at the toss, that this is the minimum that they're looking for. If they got wickets in hand, see of the early new ball scare, then you never know. You can get to 180 quite easily too. Wrong line, but straight to the fielder. How disappointed Sabzada Farhan would have been. Akif Javed must have bowled a lot better deliveries than that and not got a wicket. But that's cricket. Sabzada Farhan walks back for a duck. That's a big one. A real big one for Akif. Not the ideal of the deliveries to get a wicket, but he will take it. No worries at this end. This was on his legs, and 9 out of 10 times we will see Sabzada Farhan flick it over square leg, but not to be this time. Played it straight in the hands of the fielder who makes no mistakes. Imran Jr. taking the catch. Sabzada Farhan goes for a duck. It's 0 for 1.
Not an ideal start at all for Engro Dolphins. Sabzada Farhan's lean run continues. This is how cricket goes sometimes. This is Akhlaq making his appearance in this tournament. 133, the strike rate is mighty impressive. But that combination of average and strike rate still not hitting that magic number of 160. That is a yardstick these days for successful batters in this format. Oh, another tentative poke, no footwork. Great bowling. Mixed it up, Akif. 5 deliveries that we've seen outside the off stump, but this one to Sabzada Farhan onto his leg stump. Touch early and played it straight into the hands. He played it fine where there was that fielder. If he had taken that ball slightly earlier, just a little bit in front of him, he would have smashed it over square leg. But like I was saying, when your form is not there, you find ways to get yourself out. On another day, Sabzada could easily have struck it over square leg for a 6. Not to be today. Successful start for UMT Markhors and Akif. 1 for 1 after 1. Slightly आगे middle है. Yes, covering middle. Bowling right arm over the wicket. 4 changes for Engro Dolphins. Interesting to see what number Tahir Beg. He is opening the innings actually at the non-striker end. And this is Nisar. Mighty impressive in the first game. That's his forte. Bringing the ball in with the angle and then straightens down the line. Yeah, the bandana man, Nisar, has been impressive. And these surfaces will suit his bowling. The sort of bowler he is, bangs it in short. His best figures, 5 for 5 at this level, just 13 matches and 23 wickets to his name. Very impressive. High arm action, bangs it in short. The hard length that Salman Bhatt suggested, I think he will get it right with his action. Short and wide and punished. With his kind of pace, his lines will be very important. Not much margin for error for the medium pacers. Generally very consistent. Nisar provided the opportunity to Tahir Beg to free his arms. It has to be a combination of length and line. Weight outside the off stump, and a batter who's good at back foot will just whack you away any day. That's the example outside the off stump. You got to have that balance or the combination of line and length. That's better. The reason Nisar was so impressive in the first game, his strength was his consistency, because what you mentioned about the attributes about his height, high arm action and the movement he gets off the seam. But with his pace, he cannot err in line and length. He was very good in the first game. Bit of an untidy start in this game, conceding a boundary. But he's a good bowler. He can make a comeback. That's better. Closer, not much width. Nicely rode the bounce, Tahir Beg. Yeah, again, closer to the batter this time. A touch more would really trouble the batters. All the good bowlers that we've seen throughout the world, they find that combination, the balanced ride between line and length, and be consistent in that. We talk about line and length. The only name that comes into my mind is Glenn McGraw. He had that brilliant line with length and the consistency. Because he's not got that line and length right, so the captain is forced to bring out the slip and put him at mid-wicket. That's better. This time the inducker. Again that bounce. Almost hit
Akhlaq in the midriff. Generally don't see that is the case on Pakistani surfaces, but off a back of a length, a tall fast bowler. That is good. Nisar has really adjusted nicely after that boundary. Yeah, extra bounce, banging it in short. Just came in after hitting the seam. Akhlaq, we know that he's a bit of a dasher, but the surface demands a different Akhlaq. That's a good run. Very good run. This is better. See off the new ball without that early scare. 2 done. 9 for 1. Muhammad Nawaz, the Pindi boy, back in action, and Akif Javed after a mighty impressive first over. Nicely played. Tarbek has looked good in his brief stay so far. Yeah, talk about Akif. It was fantastic in the previous over. Line that length consistently in that area. That's why the Sabzada Farhan was not quite sure what to do, and suddenly got a bad delivery. Just went after it and played it straight into the hands. Came back with another fantastic one. On target most of the deliveries in the previous over. And now changing the angle, coming round the wicket to Akhlaq. He did the same thing in the first game too. It's quite full. He's appealing. Not very convincingly though, Imran Javed. First of all, Ali, are you surprised for him to change the angle? And he did that in the first game too. Came around the wicket in the second over. I think he's more comfortable with this line and length. Looking to take the ball away from the right-hander. Because it's that thing that surprises me. If he's trying to do that, there is no slip available for that. That seems to be the plan. There's a mid-wicket, yes, but no slip at the moment for him. Well, it was going to be only a matter of time before Akhlaq went big. Gave himself some room and absolutely smashed him off a length. Akhlaq announced his arrival. Spicy, isn't it? Just give himself room. Getting a touch predictable with this angle. Allows Akhlaq to free his arms. And we know he's very skillful. A great swing of the bat. That's how he plays. He's a bit of a six-hitter, I tell you. Akif's response will be very interesting. Oh, turned him around. Exactly what you said, Ali Yunus. Lucky he didn't get an edge on that. Brilliantly bowled. Yeah, that's a superb comeback from Akif after being hit for a six on the previous delivery. That is why I thought he's brought, but that length is right. This is a good combination of line and length with this angle. But then again, no slip. That's my concern. If that had got an edge and went through the slip, I wouldn't be a very happy Akif Javed. More heat. Take that, Akhlaq, says Akif Javed. Followed him. And a bit of a grunt as well. That's good cricket. Good aggressive cricket. Yeah, there's nothing better in this cricket, having a good fast bowler with a batter with an intent. That's a good battle we want to see. You just never know which side the battle is going. You never know. The next ball, Akhlaq can come down the track and hit you for a six. Just the outside edge. Once again, that away swinger from round the wicket. Good finish to the over from Akif after getting hit for that six.
3 done, 17 for 1. Imran Jr. from the far end. 64 wickets. Good economy because he bowls in tough phases of the innings. Tip and run. Chance at the non-striker end. Nicely placed and nicely judged single by Akhlaq. Yeah, that's... Although they've lost a wicket, but that's a good start, I would say, for Engro Dolphins. Yes, Abzada Farhan is out, but still the way these two have started off their innings, we know that these two are more audacious, likes to go big against the bowling. But they're taking their time, realizing the importance of staying there in the middle, and runs will come, more they stay. So that's what the plan should be from Engro Dolphins. Little bit of in swing, but very well managed by Tahir Beg. He's looked in good order in terms of his footwork, very clear and decisive. Early days, can only take one ball for a batter to get out, but judging by the way he's shaped up so far, he's pretty good. Yeah, good to see him back in the jersey, blue jersey. Sanullah is a good character of the game, always smiley. Edgy. Third man can be an attacking position here at Pindi. Carried to Akif on one bounce. Absolutely, call it right. Third. The fielder there is always in business. The ball flies to that position. That's why I believe that players who are good at back foot, they will be more successful. I like the hairstyle. Just like you, Ali Yunus. Oh, that's a terrific delivery. That is an absolute peach. Little bit of wobble in the air and then just landing on the seam and going right across Tahir Beg. That's a dream delivery for a left-hander. That's a perfect line, perfect length, leaving the right-hander. That's a great start for Imran Jr. He's bowled those beautiful back of the hand slow deliveries too. Be careful with that, batters. Nicely managed. Well, this has been a cracking start to this game. We've seen magnificent stroke from Akhlaq, some very good seam bowling, very skillful seam bowling. You're the style master, Ali Yunus. What about those glasses? Dapper looks good on him. Kashif being the fast bowler, I like it. Never shy of expressing themselves. That's good. You got to express yourself, young man. This has gone straight up. Who's going to take it? Wicket keeper. In the end, they all made a meal out of that. We'll come back and have a look at this, but a chance went a begging. 22 for 1 after 4, Engro Dolphins. अभी तक खेल में यहाँ हम आगे कह सकते हैं UMT मार्कोर्स को, उनके फास्ट बॉलर्स ने इस विकेट से अच्छी खासी मदद पाई है।
और इसे हुक करने के लिए गए और अब ये कैच होना चाहिए लेकिन गिरा बैठे। ये बहुत देर तक हवा में रही और फील्डर्स के पास खासा वक्त था। इमरान ने इससे पहले एक बड़ा खूबसूरत कैच लिया था साहबजादा फरहान का बाउंड्री पर, लेकिन इस बार ज्यादा वक्त होने के बावजूद गिरा बैठे। खासा फर्क है एक फ्लैट कैच में और एक ऐसे कैच में जो आसमानों को छू के वापस आता है। और यहाँ पर हमने देखा कि कीपर भी जो है उसको जज नहीं कर सके इससे पिछले वाले को, और ये वाला जो है बिल्कुल इसमें मायूस कुन बात यह है कि बॉल को हाथ भी नहीं लगा, बॉल के नीचे पोजीशन भी नहीं बना सके, जबकि इतना टाइम था कि बॉल के नीचे आया जाए। हाई कैचिंग मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ये वाले कैचेस होने चाहिए। नूरपुर लायंस के खिलाफ इनकी फील्डिंग का म्यार खासा बुलंद था यूएमटी मार्कोर्स का, लेकिन आज इनसे कुछ गलतियां सरजद हुई हैं। तारिक भाई ये देखिए, ये वो कैच है जो इससे पहला था जिसमें 3 फील्डर्स जो थे वो बॉल की ताक में भागे और कीपर जो थे वो सबसे सेफ हो सकते थे, लेकिन उनके हाथ तक को बॉल नहीं लगा। तो यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेक शिफ्ट कीपिंग है ये कभी कभार बहुत महंगी साबित हो सकती है। T20 क्रिकेट में इसका कुछ ज़्यादा ही फैशन चल पड़ा है कि एक बैट्समैन बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे कप्तान जो हैं वो नॉन रेगुलर कीपर्स को ही तरजीह देते हैं। जहां इस फॉर्मेट के साथ ये बड़ी तब्दीली आई है कि अब अक्सर टीमों में या तो आपको बैट्समैन विकेट कीपर नजर आते हैं या फिर एज बैट्समैन जो गेंद को रोक सकते हो विकेटों के पीछे। जी हाँ, और ये खासा महंगा साबित हो सकता है क्योंकि अगर अच्छा बैटर है और उसको चांस मिलता है और वो बड़ा 100 कर देता है तो फिर आपको रेगुलर कीपर याद आएगा। इस बार सिर्फ ऊंचा नहीं है, इस बार फासला भी है और बासानी तय किया, पेस का इस्तेमाल किया। ताहिर बेग ने बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक शॉट बॉल किया और पिवट करते हुए उसको हेल्प किया उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, यहाँ एंगल से भी उनकी मदद हुई, ये उम्दा शॉट था। अपने कद का उन्होंने पूरा फायदा उठाया, पिच की पेस का भी। ये बिल्कुल गेंद जैसे ही बल्ले पर लगी थी इसका जाना तय था सीढ़ियों में। ये जो दराज कद खिलाड़ी हैं ये पिछले गेंद को इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलते नजर आए हैं, उसके खिलाफ ये बड़े पुरसकून है। हसन नवाज को भी हमने देखा, वो पिछले गेंदों को अच्छा मैनेज किया उन्होंने, और आज ताहिर बेग भी बड़े आराम से इन गेंदों को हिट्स लगा रहे हैं। गेंद की वापसी हुई है, काफी दूर गया था, वक्त लग गया आने में। जहाँ इससे एक तातुल सा आया है तो यहाँ इफ्तिखार अहमद को अपने सीनियर क्रिकेटर के साथ बात करने का मौका मिल गया है। अच्छी कप्तानी की उन्होंने, पहले मैच में उम्दा इनिंग्स भी खेली थी, 42 रन की मैच विनिंग इनिंग्स, और ये पहले से ये तयशुदा शॉट था। अच्छे स्ट्राइकर रहे ताहिर, HBL PSL से सामने आए थे लाहौर कलंदर के लिबास में, और सियालकोट से आते हैं T20 हालिया दिनों में, वहां से बहुत अच्छे क्रिकेटर निकले T20 के। ताहिर बेग जो है वो एक पूरे बैट्समैन के तौर पे सामने आते हैं। PSL से पहले मैंने इनके काफ़ी मैचेस देखे, जो अच्छी क्लब क्रिकेट है उसके अंदर ये T20 मैचेस में सेंचुरियां करते रहे हैं रेगुलरली, और ये ना सिर्फ बड़ी हिट मारते हैं बल्कि इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना भी नहीं आता है। बीच में आपने देखा आज भी सिंगल्स भी अच्छे कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छी है और क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते हैं ज़्यादातर। ये गेंद फिर से करना होगी, 1 रन का भी इजाफा होगा। यहाँ पर डॉल्फिन्स के स्कोर में इमरान जावेद अंपायरिंग कर रहे हैं इस वक्त फार एंड पर। सलमान भट्ट के साथ खेल चुके हैं ये माजी में नेशनल बैंक से, और उनके साथ दूसरे अंपायर हैं इमरान जावेद के साथ इस वक्त
राना मरशद। पांच फील्डर हैं इस वक्त ऑफ साइड में, उस एंगल की वजह से जो अराउंड द विकेट आ रहे हैं। आकिफ, और शानदार शॉट, काबिले तारीफ यहां पर मिर्जा ताहिर बेग ने एफर्टलेस उन्हें छक्का लगाया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। वाह वाह, बिलाशुबा एक इंतहाई खूबसूरत शॉट, हाई क्लास शॉट है ये, और बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी और कंट्रोल वाला स्ट्रोक है। और आकिफ जो है वो कोई इतने आसान बॉलर नहीं है कि जिनको ये स्ट्रोक खेला जाए। क्या कहने ताहिर। और डॉल्फिन्स 38 पे 5 ओवर्स के अख्ताम पर। परेशानी लाहक हुई है पिछले ओवर से इफ्तिखार अहमद को। दरअसल इन दोनों के मिल जाने के बाद अखलाक और ताहिर, ओह इस बार अपना दामन बचा नहीं सके ताहिर। यह है इन दिनों नॉन स्ट्राइकर को बेहद खबरदार रहना पड़ता है। जी हाँ, खुद तो साइड पे हो गए लेकिन उनका बैट गेंद की लाइन में आ गया और 4 रन्स जो हैं वो उसमें से 3 कम हो गए। ये देखिए, और कितना जोरदार शॉट था कि बैट कहाँ तक गया हाथ से निकल के। तो अखलाक थोड़ा सा ज़रूर फील करेंगे कि उनको ये चौका मिल सकता था, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बड़ा स्कोर करने में बहुत किरदार अदा कर सकते हैं, और ताहिर बेग तो बड़ी इनिंग खेलने में महारत रखते हैं। अच्छी गेंद थी, लेग साइड में खेलने के लिए गए। अगेंस्ट द स्विंग, आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का। यहाँ पर मौका है 50 से आगे जाने का, और ये वो शॉट था ऑन द आप खेला। और ये आसान बॉलर नहीं है, जिस तरह सलमान भट्ट ने कहा सामने शॉट खेलने के लिए, और यहाँ सामने शॉट खेलना आसान भी नहीं है रावलपिंडी में। देखिए लंबे हैं, आप उनका हेड और कितना स्टिल है, उनकी एल्बो, हाई एल्बो को देखिए, टेक्निकली परफेक्ट शॉट था। और क्रिकेटिंग स्ट्रोक कह सकते हैं। और ताहिर बेग का जो दराज कद होने की वजह से वो ये वाला शॉट एग्जीक्यूट आराम से कर गए हैं, वरना ये बड़ा मुश्किल शॉट है। और पूरा डिस्टेंस किया है बॉल ने, 6 रन्स हुए हैं सामने विकेट के। आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया, दराज का धोने की वजह से ताहिर बेग को आसानी हुई फिरो करने में। यहाँ ये दरअसल T20 का जो खेल है, इसमें बैटिंग में आपके पास पावर होनी चाहिए, कद होना चाहिए, वरना आप पीछे रह जाते हैं इस खेल में। ये ताकतवरों का खेल जो है ये बनता जा रहा है, और ताकत दिखाई यहाँ मोहम्मद अखलाक ने भी। गेंद एक टिप्पे पर बाहर गई, लेग साइड बाउंड्री के। ये पार्टनरशिप जो है ये पलक झपकते में ही 44 को जा पहुंची। देखिए बिल्कुल ये भी शॉट बड़ा शानदार था, लेंथ को पिक किया, थोड़ा सा गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा था एंगल करके, लेकिन बहुत आराम से उस पर काबू पाया अखलाक ने। कंट्रोल शॉट था, 4 रन हासिल किए। और मुश्किल टाइम होता है सुबह का पहला जो आधा घंटा बैटिंग करना इन दिनों में, दिसंबर चल रहा है, और यहाँ पर ये दोनों ने बड़ी महारत से बारी ली और 2 चांसेस ज़रूर इन्हें दिए हैं, जो कि कह लीजिए कि फील्डर्स के ऊपर कप्तान इतने खुश नहीं होंगे। दोनों दफ़ा अखलाक को वो चांसेस मिले, और ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं डैमेज कर सकते हैं ऑपोजिशन को। अखलाक वेस्ट इंडीज से आए हैं, गयाना में T20 क्रिकेट खेलकर, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खेल गए 4 रन्स के लिए। किस्मत का अमल दखल ज़रूर था, लेकिन रन्स इनको चाहिए हैं, और ये पावर प्ले का बराबर फ़ायदा ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए आपने मिड विकेट और स्क्वायर लेग को डीप कर लिया, थर्ड को ऊपर बुला लिया, तो फिर बैटर ने अपने आप को रूम तो बनाना है, लेकिन एटलीस्ट इमरान यहाँ पर उस लेंथ को ज़रूर उन्हें रखना चाहिए था, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और उनको फॉलो करना चाहिए था बैटर को, क्योंकि ये तो होना ही था कि जब आप ऑफ स्टंप पे सारे बंदों को ऊपर बुलाएंगे तो फिर बैटर रूम बनाएगा। आइडिया ठीक था अखलाक का, रिजल्ट भी उन्हें वही मिला, बस एरिया कुछ और था।
शायद इस ओवर के बाद जल्दी इफ्तिखार अहमद को अपने स्पिनर साद मसूद की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पेस खातिर खा परेशानी का सबब नहीं बनी है। स्लो डिलीवरी थी, वाइड नहीं रही। हैरत का इजहार किया मोहम्मद अखलाक ने। एक और ओवर जिससे आया 10, 48 और 1। ये पावर प्ले जिसकी इब्तिदा विकेट से हुई थी साहबजादा फरहान के बाद अज़ां ताहिर बेग के साथ मोहम्मद अखलाक ने बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया है। पहली इनिंग्स में उन्होंने बड़ा दिलकश स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया, ऐसा कम देखने में आया। जरूर ये दोनों खिलाड़ी हैं, इनको किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन वो T20 में दरकार होती। जी हाँ, आ गए साद मसूद। हम जिक्र कर रहे थे लेग स्पिनर को जल्दी लाना होगा। विकेट टेकर है, पिछले मैच में खासी नपीतुली बॉलिंग की थी, प्लेयर ऑफ द मैच ठहरे थे। जी हाँ, अच्छी गुगलियां भी करते हैं और गुगली पे इन्हें ज़्यादा टर्न मिल रहा था पिछले मैच में। करियर का आगाज़ है और अच्छा एक्शन है। शदाब से बहुत मिलता जुलता है इनका एक्शन। अर्ली डेज जब शदाब के करियर की शुरुआत थी तो बहुत ही ज़्यादा रिजेम्बलेंस है एक्शन के अंदर। यहाँ लंबे कद के हैं, बाउंस मिलता है इनको, और ये स्टारडम का यही फायदा होता है। स्टार्स को देखकर लोग जो हैं उन्हीं की राह को अपनाते हैं। यही वो शादाब खान की तरह ग्रिप भी वैसी है। पहले अब्दुल कादिर जिस ज़माने में वो सुपरस्टार थे, तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी कॉपी की जाती थी, उनकी बॉलिंग एक्शन की, उनके रनअप की। जी हाँ, बिल्कुल। यंगस्टर्स जो हैं वक्त के जो मौजूदा सितारे होते हैं उनको फॉलो करते हैं और यहाँ पर 4 डॉट बॉल्स उन्होंने कर दी हैं। सो प्रेशर बिल्ड कर दिया उन्होंने इस ओवर में, और ये भी अच्छी गेंद। ज़्यादा मालूम नहीं था इसके बारे में ताहिर बेग को, और ये थ्रो जो कि कहीं की कहीं और ही गई कि अंपायर्स को एवेसिव एक्शन लेना पड़ा। और अच्छा आगाज़ है। इस ओवर में 1 रन बना अभी तक 5 बॉलों में। अंपायर खुश नहीं है थ्रो से। जी हाँ, क्योंकि ये उन्हें उनके लिए खतरनाक हो सकता था। उम्दा बॉलिंग साद मसूद की, अच्छा टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया 2 सेट बल्लेबाजों के सामने आकर, और अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए। 7 ओवर्स और 50 रन मुकम्मल हुए, 1 विकेट। उमर अमीन इसके बाद आएंगे, टीम के कप्तान हैं, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे बगैर कोई रन बनाए। मोहम्मद सलमान ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, 34 रन की। आज कासिम अकरम के आने से भी बैटिंग को खास एनर्जी मिलेगी। अच्छे बल्लेबाज हैं कासिम अकरम, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। मोहम्मद नवाज भी हैं, तो 2 स्पिनर्स से इनका पाला पड़ेगा। दोनों सेट हैं, बॉलर्स के पीछे जाना तो है अब इन्हें। इस बार 1 ही रन बनेगा। लॉन्ग ऑन की तरफ खेले हैं अखलाक। ये दोनों बैटर्स जो हैं स्पिनर्स के खिलाफ भी अच्छी इनकी स्किल्स हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं स्पिनर्स को। शायद 1 आधा ओवर देखने के बाद जो है ये फिर अपनी शॉट्स की तरफ वापस आए, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बहरहाल इन्होंने बना लिया। ओह, अच्छी डिलीवरी
ये आउटसाइड है इसे, और ये स्टंप से भी ज्यादा दूर नहीं थी, खुद विकेट कीपर भी हैरान रह गए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा गेंद, शार्प टर्न हुआ, ये देखिए एंगल के साथ अंदर आया, और ताहिर बेग थोड़ा लूज भी खेले, और अच्छी चीज़ ये है कि अखलाक ने फ़ौरन आके उनसे बातचीत की है। तो ये कम्युनिकेशन बैटर्स की काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ये अच्छा शॉट खेला, स्वीप शॉट खेलने में कामयाब हुए, और उम्दा क्रिकेट दोनों जानिब से, बाउंड्री बचाई। अच्छी समझदारी का मुजाहरा किया आकिफ जावेद ने बाउंड्री लाइन पर। ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं फील्डिंग के एतबार से। इफ्तिखार अहमद कप्तान थे जब इनकी टीम फाइनल हारी थी चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का फैसलाबाद में। और ये चाहेंगे कि इनकी ताकतवर टीम को इस बार ये लकीर से आगे ले जाएं। देखिए, ये अच्छी चीज़ है इस पार्टनरशिप की कि जैसे ही वो देखते हैं कि अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो स्ट्राइक रोटेशन की तरफ आते हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं। और यही वो फ़र्क था जो कल के मैच में हमने देखा जब शोएब मलिक बैटिंग पर आए, और ये भी दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अपील है और करीबी मामला हो सकता है, अंपायर ने रेफर किया थर्ड अंपायर को। शायद थोड़ा सा ताहिर बेग थोड़ा सा लेट निकले हैं, थोड़ी हिचकिचाहट, देखना होगा कि कहीं ये बहुत महंगी ना पड़ जाए। ऑन की तरफ खेलना चाहते थे, एज लगा और पॉइंट फील्डर ने अच्छा एंटिसिपेट किया, काफी तेज आए वो, शायद डायरेक्ट ना लगी हो तो इस वजह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए, वरना अभी तक तो तस्वीर में नहीं है। यहाँ पे बड़ा करीबी मामला होगा ये, बैट यहाँ पर तो ग्राउंडेड ही नहीं है, और ये बीच वाला जो एक फ्रेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मुश्किल में लग रहे हैं क्योंकि यहाँ बेस जो है अभी तक ग्रूव में है, इससे जो अगला फ्रेम होगा वो जाहिर है हमें ज्यादा अच्छी जगह पर ले जाएगा। यहाँ हाथ तो लग गए थे विकेट कीपर के, लेकिन क्या जो बेल्स हैं वो निकली हैं उस रखने से। जी हाँ, बिल्कुल मामला बेल्स के निकलने पर है, और अगर बेल्स ग्रूव से बाहर निकल आई हैं और बैट लाइन के ऊपर भी हुआ तो ये आउट होगा। ये वो फ्रेम है जहाँ पर ये लाइन के बहुत करीब हैं, और लेकिन बेल्स का पता तभी चलेगा जब दूसरे एंगल से हम देखेंगे, इस एंगल से तो बेल्स नजर नहीं आ रही। ये वो एंगल है। वो टीवी अंपायर हैं, उन्हें कुछ मुश्किल फैसले करना पड़े हैं पिछले 2-3 दिन से, 4 में से 3 दिन वो टीवी अंपायर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पर फ्रेम अवेलेबल है उसके मुताबिक तो फिर जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है वो तो फिर बैटर को देना पड़ेगा। अगर बेल्स तब गिरी हैं जब बैट अंदर आ गया है तो फिर तो बैटर के हक में ही फैसला जाएगा। जहाँ वो जो दरमियानी फ्रेम है वो चाहिए हम सबको ताहिर बेग के सिवा। जहाँ लेकिन यहाँ जो है ये अंपायर जो हैं यहाँ पर ये शायद आउट देने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी गवाही नहीं है कि वो फैसला ताहिर बेग के खिलाफ दें। जी हाँ, इसमें 4 गवाह नहीं है, इसमें ये नहीं हो सकता। इधर 2 भी नहीं है, सो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बात आगे बढ़ेगी और एक मौका और मिलेगा इन दोनों को। काफ़ी लकी भी रही है ये पार्टनरशिप, 2 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं, ये रन आउट का फ्रेम नहीं मिला कंक्लूसिव, और ये देखिए इस बार बाहरी किनारा एक बार फिर अच्छी बॉलिंग की है दोनों स्पिनर्स ने, और आज थोड़ा सा टर्न और ग्रिप भी हमने देखा है अभी तक। जी और उसकी वजह जो है हल्की हल्की तरावत है इस पिच में पहले दिनों के मुकाबले में, इससे लेफ्ट आर्म स्पिनर को जल्दी लाया गया, कारगर भी रहे। 8 के बाद 56 पर 1।
So the second wicket partnership still continues for Engro Dolphins, saved by the skin of their teeth. The first wicket fell without any score. And once again, drifting down the leg side, a strong appeal by Saad, but they have been bowling well, and at least the flow of the runs have been stopped courtesy these two spinners. He bowled phenomenally in the first over, and once again going with a lot of guile and heart, drifting down the leg, but never mind. This has stopped the flow, but full toss offered, played rather too straight, so straight that it crashed into the non-striker end. Ducking for cover was Imran Javed. That was firmly struck. But Saad Masood has put the brakes on the scoring. Just the 2 runs of his 8 deliveries. Good young cricketer making a name for himself in this tournament already. Ooh, that could have been ouch if it had gone past the stumps. Imran Javed. Talking about Saad, he's been very impressive. These two players are fresh from the Global Super League being played in Guyana over there in West Indian and Caribbean islands. And they've shown a lot of temperament and the talent also so far in this partnership. The way they have been rotating the strike, even the flow of runs was not on their way, has been instrumental, and especially for Engro Dolphins, who have been 1 down in this tournament. And finally, they were able to break the shackles. This might run all the way. Yes, a drought of 17 balls has finally broken with this lucky escape for Akhlaq. Another boundary for him. They brought the luck, you'd have to say, in this partnership, especially Akhlaq. Once again, saw the flight, went after it. Edgy. And will take the boundary, Akhlaq. Like I said, we all know Akhlaq only knows one way to bat. Despite not being in full flight, he doesn't really have anything else to fall back on. But he's given his team a platform. 32 now of 24 deliveries. These two came all the way from across the Atlantic, have just joined the team, and I think that was the reason they were not able to part of the first playing 11. And at least these 2 changes have done the trick for the Engro Dolphins. Better over for them, 9 gone, 63 for 1. Lovely morning in Pindi, everything at its perfect place. Deep blue skies with a whiff of cloud and sunshine in abundance. Exactly noontime over here. And the sunshine is looking very good on these 2 kits as well. Bright green and dark blue. Nawaz has bowled his previous over smartly, just giving away 6 runs. Saad just conceded a boundary, but only 1 boundary the last 20 balls. And these 2 need to be wary of the arm ball. He produced 1 off delivery in the previous over, and that was almost too good for Tahir Beg. They are riding on the luck, so it's a matter of time how soon they will start once again exploding against the spinner also. Back and across and made all the room in the world, but right into the hands of Fakhr. So finally this partnership of 63 runs has been broken by Nawaz, the spinner, doing the trick for UMT Markhors. Well, just gave himself some room, looking to open up that offside. No problem here with Nawaz. But there you go. He wanted to hit a lot squarer, but that fielder was quite wide at mid-off. And straight into the lap of Fakhr Zaman, who's a very good outfielder. Tahir Beg played pretty nicely, gone for 29. Engro Dolphins 63 for 2. And players are taking drinks here at the Pindi Stadium.
Lovely afternoon in Rawalpindi, where Engro Dolphins are asked to bat first to win their first game of the Barrier Town Champion Cup. They lost once again Sabzada Farhan without contributing anything, but they have just lost the set batsman Tahir Beg, who playing in the first game of the tournament made his mark, and this was Sabzada Farhan for you. Once again, perishing down the leg side, right into the hands of Imran Jr. Couple of chances in between, but then Tahir Beg, trying to break the shackles, played into the hands of Fakhar Zaman. A wicket apiece for Akif Javed into his very first over, and Nawaz joining the party. Nisar bowled phenomenally well, but he must be coming back sooner rather than later to bowl his second over. Imran Jr. and Saad stopped the flow of runs, especially Saad, but still waiting for his first wicket. So here we are, a Pindi boy to another Pindi boy. Nawaz bowling to Umar Amin, who was captaining the side in the previous game. These two must have seen a lot of each other. Umar Amin played for Gul Cricket Club in Rawalpindi and Nawaz for Railway Cricket Club. Not too far, both of these clubs from here where we're playing. No. Prolific cricketer Umar Amin. He's been around for a while. As fit as a fiddle even at this stage. He's got an important role to play here. There's always a sense of excitement when we call someone a Pindi boy. So you're happy to call yourself a Pindi boy, Shah Faisal? Well, of course. I played all my cricket here. I lived here a long time. Yeah, I don't Pindi mind boy that. coming from Atlanta after becoming a man and back to Pindi. You can take a man out of Pindi, but you cannot take the Pindi out of him. 10 gone, 63, 64 for 2. So here we are, the double road in the middle of your screen. If you like to go all the way to Constitution Avenue, you can ride that red bus, which will take you all the way through, maybe a ride of an hour or so, but all smooth without any red signal or anything. And here we are midway through the innings. Saad is applying some red signals on the innings of Engro Dolphins. 64 for 2. They must be eyeing a total of at least 160, but for that they will need to build up a partnership and ride on the likes of Salman and Qasim Akram as well. Talk about this Rawalpindi Cricket Stadium. It was built in 1990. First game played in 1991. Few spectators have turned up. Pretty cold, but they're all wrapped up pretty nicely. At the moment, the sun is out. It's brilliant. Big shout. Umpire Imran Javed says no. Saad has been very impressive in this tournament so far with his control of his wrist spin. Very good prospect. He was not able to read that one. That crashed onto the pads, but clearly drifting down the light side once again. And finally, a shot of frustration by Akhlaq coming down the track, trying to reach the pitch of the ball, but never mind, he was not able to do that. Talking about the options available at Iftikhar, we cannot forget you talking about the Rawalpindi Cricket Stadium just 4 years back in COVID times. Iftikhar produced a spell out of thin air against Zimbabwe's, so far his ODI's best bowling figures, 5 wickets for him, which broke the back of Zimbabwean innings. So if they are to compensate for an over or so, he can also turn his arm over and once again oohs and ahs out there. Well, he was gone for all money.
He was gone for all money. Look at that. Quick bit of work. Khwaja Nafay not even in the picture. Akhlaq had given up. Another half a chance goes a begging for UMT Markhors. Akhlaq is saving his innings by the skin of his teeth. Couple of catches dropped, and then that direct throw, and then we also got another run out which went upstairs to Kaisar Wahid, the television umpire, and a lot of rock and roll, but the decision came in favor of the batter. And finally he went big. The fielder is coming underneath it, but not able to catch that one. There was a chance and he was a little late to grab that ball just after touching his palm. He could not grab that one. Another life for Akhlaq. Well, they've been very sloppy in the field. The UMT Markhors. Misbah Haq won't be very happy with that. It was Nisar, the tall fellow. Looks like he's parried the ball over the fence. Umpire wants to check if it landed over. And it did. Well. This is not very good from UMT Markhors. 11 gone, 73 for 2 Engro Dolphins. Yeah, Lady Luck smiling once again on Akhlaq. Another catch gone for backing. Coming back for the second once again, but no opportunity at this point in time. So talking about the catches gone begging. The first one, the wicketkeeper, then came Imran Jr. and this time Nisar joining the bandwagon. And courtesy all that, Akhlaq is still out there in the middle with 8 wickets in hand. They could go well beyond 160, but depending upon how the spinners are going to feature the rest of the innings. Gone. It made a cracking sound. And Umar Amin, realizing the need to go big, has struck gold here. Magnificent strike. He made it look easy. Umar Amin, a slight use of feet and proper swing off the willow. It kept on going, and a cracking sound also. That acoustic angle makes it even more delicious in this quiet Rawalpindi cricket ground. Good beginning for Umar Amin, the senior campaigner. He was leading the side in the previous afternoon. Pitched way outside. No chance for that from that angle. Just cramping Umar Amin there. Nawaz, good bowling nonetheless. No length or width to work with. So Shah Faisal, if you were the captain and looking at the grip and turn, you would ask, or Iftikhar would ask himself or bring himself to bowl upon to compensate for maybe Akif or Imran Jr., the expensive overs, which might come in the later part of the innings. Another big strike. Shouts to catch it. And catch it, it has been. Fakhr Zaman once again at the right place. This is a magnificent catch in the deep. And Umar Amin, who was realizing the need to go big and catch up on lost time, has perished in the cause. Played one shot too many, just trying to once again go for that big heave across the mid-wicket region, but played rather towards long on area. Fakhr Zaman was just waiting for that opportunity. Easy taking for him. His second catch of the afternoon. And Umar Amin, just after getting into double figures, departs. Engro Dolphin on spot a bother. 81 for 3. So in the blink of an eye, the world is looking good for UMT Markhors. Back-to-back catches for Fakhr Zaman and
Mohammad Nawaz is the bowler. The same combination doing their trick for UMT Markhors, and out of nowhere, they've got plenty of options now as far as the bowling is concerned. Saad Masood must most likely complete his spell in the next over, and then they will be getting all the options in terms of Akif, Nisar and Imran Jr. Qasim Akram making his first appearance, that average of 20, strike rate of 124. It's a very good young middle order batters. His type of players, few and far apart for Pakistan. Definitely looking for a solution to their middle order in white ball format. Qasim Akram has the potential. He has the opportunity now to just make use of the stage he's been given to. Starts off with a wide, and Qasim Akram is here because Umar Amin lost his wicket. He hit a 6 earlier. Good bowling from Nawaz because Umar wanted to go straighter but couldn't get to the pitch. Indian had to drag it wide to where the fielder was. Fakhar made it look very easy. Another successful over by Nawaz coming to an end. 8 to go, or we still got one more to go. So Engro Dolphins will need to do the recovery work from here on. They've still got Mohammad Salman and Fahim Ashraf to come, but at one point in time, especially when the 63 runs partnership was going on, they were looking really pretty. Will have to find their way back into this game, trying to search for their first victory of the Barrier Town Champions Cup. 1 over to go for Mohammad Nawaz. 12 gone, 83 for 3. स्पिनर्स ने आकर इस मैच का जो हुलिया है वो बिल्कुल बदल के रख दिया। ये मुसलसल चौथा और आखिरी ओवर होगा। ऐसा कम हम देखते हैं बड़ी लीग्स में कि एक ही बॉलर जो है वो आकर मुसलसल अपने 4 ओवर्स कोटा मुकम्मल कर जाए। ये अच्छा खेलते हैं स्पिन को कासिम अकरम, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए आसान बना लेते हैं पिच पर पहुंचकर कि दोनों तरफ खेल सकें विकेट के। अच्छी रनिंग, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी यहाँ पर दोनों के दरमियान। काफ़ी अरसे के बाद एक साथ खेल रहे हैं और काफ़ी अरसे के बाद अली यूनुस भी आ गए हमारे साथ, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, काफ़ी अरसे के बाद ही आपके साथ माइक शेयर करने का यहाँ पे शर्फ हासिल हुआ है। अच्छी रिकवरी की है जैसे आपने कहा यूएमटी मार्कोर्स ने, और अब एक बार फिर रीबिल्डिंग फेज से गुजरना होगा। और दोनों बैटर्स में वो पोटेंशियल है कि वो बड़े रन्स कर सकते हैं। इखलाक वेल सेट हैं, 29 बॉलें खेल चुके हैं। कासिम अकरम की इंटेंट हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव रही है, रन्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन अभी शायद 1-2 ओवर के लिए थोड़ा संभलना होगा, एक पार्टनरशिप को दोबारा डेवलप करना होगा। ऑन साइड में आसानी के साथ एक रन हासिल किया कासिम अकरम। इन दिनों ये भी एक वो जो कहा जाता है कि वो शनाख्त का एक बहरान सा रहा है इनके हवाले से, कोचेस का भी शायद खुद इनका भी, क्योंकि जब ये उभर के आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप से, जब इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी बनाया था वेस्ट इंडीज़ में, एक ही मैच में 5 विकेट, सेंचुरी भी, और बाद उस साल 2020 में बहुत अच्छा खेले थे कायदे आज़म ट्रॉफी में भी। लेकिन इनकी जो पेशरफ्त है कदरे रुकी है, गो के ये खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट भी हाल ही में जिम्बाब्वे में। इस पर बात करते हैं अली से। 13 ओवर्स के बाद
यहाँ 87 पर 3। ज़्यादातर टीमें जो हैं इस बैरियर टाउन पाकिस्तान चैंपियंस कप में 5-5 बॉलर्स खेल रही हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही है और ऐसे में जल्दी विकेट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर 5 बॉलर्स के साथ कप्तान मैदान में उतरा हो, बिल्कुल ऐसा ही किया था आकिब जावेद ने। आज जल्दी चलता किया साहबजादा को। जी और ये जो पिचेस हैं ये पार्ट टाइमर्स के लिए शायद उतने फ़ायदेमंद है भी नहीं। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्किल चाहिए, एग्जीक्यूट करते हैं तभी आप यहाँ पे आपको कामयाबी मिलती है इन पिचेस पे। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच से जरा दूर रह गए थे और ये शानदार कैच। साद मसूद ये नए आए हैं और ये इन्होंने कर दिखाया। बेहद मुश्किल कैच था और बिल्कुल ये गैर पाकिस्तानी बाउंड्री कैच लगता है। इसीलिए इसे हम कारनामा कह सकते हैं कि शानदार कारनामा अंजाम दिया इन्होंने। नजरें रखी बॉल पे एंड तक और अच्छी फिटनेस भी दिखाई, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस तरह का कैच जब भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, खुश होंगे क्योंकि बड़ी विकेट है। अखलाक अब ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े शॉट्स की तरफ जा रहे हैं। अंपायर अभी थोड़ा शायद वेट करेंगे, थर्ड अंपायर से इन्होंने रुजू किया है कि क्या ये क्लीन कैच है या नहीं। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कनेक्शन अच्छा था। ऐसा लगा था कि जैसे शायद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी और यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन, बहुत सही टाइम पे रिलीज किया है बॉल और फिनिश भी अच्छा किया है। यहाँ पे चलते ही चले जाना होगा इखलाक को, क्योंकि बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। जी हाँ, उन्हें अपने कद का भी फायदा हुआ और बड़ी अच्छी पोजीशन ली, क्योंकि जानते थे उन्होंने दरअसल इस मैदान का, फील्ड का हर इंच इस्तेमाल किया और यही होना चाहिए एक बाउंड्री राइडर के लिए, बड़ा ज़रूरी है। अच्छी टेक्निक दिखाई, जल्दी उन्होंने गेंद को छोड़ दिया, उसके बाद नीचे आ गए, पूरी तरह कंट्रोल में थे। बेहतरीन कैच बिलाशुबा इस टूर्नामेंट का। और सेट बैट्समैन को इस अंदाज में चलते करना, जब एक लम्हे के लिए खुद उनको लगा हो कि छक्का है, उनके टीममेट्स को भी, इसीलिए फील्डिंग जो है वो जितवाती है आपको मैचेस। 87 पर 4। Come on, boys. Please. Bye-bye, boy. मोहम्मद सुलेमान इनकी सारे फॉर्मेट्स में, सीनियर क्रिकेट में इनकी अच्छी औसत है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 की औसत है, 40 की औसत है। T20s में अपनी विकेट की कदर करते हैं। अच्छी बैटिंग करके गए थे 2 दिन पहले भी। बैट पर अच्छा खेलते हैं। हैदराबाद से जितने भी बल्लेबाज हमने आते हुए देखे हैं, वो बैकफुट के सारे ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और उनके आने की वजह ये बनी क्योंकि बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। और अभी आपने जिक्र किया कि फील्डिंग के अंदर फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फिट होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं, एक्रोबैटिक चीज़ें। तो बहुत ही कमाल का कैच और ये मैच चेंजिंग हो सकता है, रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा। बैकफुट पर खेला लेकिन बाउंड्री नहीं मिलेगी। दूसरे के लिए जल्दी कासिम अकरम फिर से आए बैटिंग एंड पर। दोनों स्पिनर्स ने आज स्कोर के सामने जिस तरह पहले मुजाहमत की, उसके बाद विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया
उन्हें किसी हद तक आसान लिया है, जिस तरह उठा उठाकर हिट लगाते रहे उनके सामने डॉल्फिन के बल्लेबाज। एक बार फिर 2 रन की कॉल है, दोनों ही बहुत फिट और यंग है, प्रेशर डाला है फील्डर पे, बहुत आसानी से दूसरा रन मुकम्मल किया है। साथ ही थे इस बार फील्डर, शायद अभी भी उसी कैच के बारे में सोच रहे हैं, सपनों में घूमे, क्योंकि ऐसा कैच आप याद रखते हैं, आपके जहन में रहता है ऐसी एफर्ट। जी हाँ, आपके करियर के जो बेहतरीन लम्हात होते हैं कई, वो आपको भूलते नहीं हैं, ये उन्हीं में से एक था। ये लम्हा भी देखिए बड़ी फुर्ती से उन्होंने, ये एफर्टलेस तरीके से उन्होंने कैच मुकम्मल किया। और स्वीप शॉट खेला स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से, ये दूर दे मारा। कासिम अकरम ने अब किया है फैसला कि ये दिन उनका हो सकता है। खास बात रहेगी, 14 ओवर्स गए, 98 पे 4 डॉल्फिन्स। देखिएगा पिछले ओवर में 11 रन बने, इसलिए एंग्रो डॉल्फिन्स ने किसी हद तक सुख का सांस लिया होगा। यहाँ भी 6 ओवर्स हैं, कल 162 रन बनाकर जो एबीएल स्टैलियंस की टीम थी उससे मैच जीत लिया था, वो एक मिसाल इनके सामने है। लेकिन एंग्रो डॉल्फिन्स की जो बॉलिंग है उसमें ज़ाहिर है उस पर कुछ सवाल आते हैं, इसलिए शुरू में तो इनकी ख्वाहिश जो है उससे ज़्यादा की होगी। कप्तान ने भी कहा था कि नया बॉल बहुत ज़रूरी है, और ये जो इस तरीके से जो इंटेंट दिखाई है, ये बहुत शानदार पॉजिटिव बैटिंग करते हैं कासिम अकरम, जिस नंबर पे ही खेलते हैं। अगर आप इनके जोन में बॉल करेंगे, आगे बॉल किया, अच्छा स्विंग ऑफ द बैट, बैलेंस भी बहुत कमाल का था, और यही खास बात है इस यंग प्लेयर की। अभी हालिया में फर्स्ट क्लास में 2 सेंचुरीज बनाई हैं लाहौर ब्लूज से खेलते हुए। पुल शॉट खेलने के लिए गए और ऑफ द विकेट गेंद उस रफ्तार से नहीं आई। कासिम अकरम जिसकी तवक्को में थे, और निसार ने हासिल कर ली विकेट। एक बार फिर गेंद के नीचे आना पड़ा यहाँ साद मसूद को। थोड़ा शायद ज्यादा अग्रेशन दिखाने चले गए कासिम अकरम ने, हालांकि 6 रन हासिल किए थे पिछले ओवर में। यहाँ पे एक बार फिर पॉजिटिव अटेम्प्ट दिखाते हुए, अटैक करते हुए पहले ही बॉल पे, दूसरे बॉल पे निसार को इतना पीछे बॉल था नहीं पुल शॉट मारने के लिए, थोड़ा जल्दी भी बॉल आया, थोड़ा लेट रिएक्शन था जिसकी वजह से बॉल हवा में गया। एक और कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन अच्छा बात रही ये रही कि कॉल कर दिया। 14 रन कासिम अकरम ने बनाए, 99 पर 5 एंग्रो डॉल्फिन्स। आज 4 तब्दीलियां की थी एंग्रो डॉल्फिन्स ने, उन्हीं में से एक हैं फ़हीम अशरफ जो अब खेलने के लिए आए हैं। ये इनके पसंदीदा मकामात में से एक है। यहाँ इन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स ये माजी में खेल चुके हैं। HBL PSL में हारे हुए मैचेस इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कई बार जितवाए, लेकिन यहाँ इस वक्त किरदार मुख्तलिफ है। यहाँ टारगेट सेट करना है, क्योंकि ये बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए रावलपिंडी की पिच इनको सूट करती है, बॉल अच्छे तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बॉल पीछे था नहीं और पुल शॉट खेलने चले गए, टॉप एज हुआ। कासिम अकरम की जानिब से शायद 1-2 बॉल और देख सकते थे, फास्ट बॉलर की पेस से हम आहंग हो सकते थे, लेकिन ये मॉडर्न डे बैटर्स हैं, ये नहीं रुकते हैं।
दोनों ही नए बल्लेबाज विकेट पर। और निसार जो हैं ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलर नहीं है, लेकिन दोनों ही दिन खासी मुतासिर कुन कारकर्दगी इनने पेश की। पहली सुबह टूर्नामेंट की बैरिया टाउन चैंपियंस कप 2024 में इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। ये नया मंसूबा है बैरिया टाउन का, अब ये ग्लोबल होने चला। दुबई में चांस हो सकता है, डायरेक्ट हिट भी लगी है। क्या ये करीबी मामला हुआ है? अंपायर यकीनन तीसरे अंपायर की तरफ देखेंगे कि क्या शानदार फील्डिंग है ये। डायरेक्ट हिट जो होती है वो हमेशा ही खतरे की घंटी होती है बैटर के लिए, और शायद उनको भी एहसास है, आधा रास्ता तो उन्होंने फासला तय कर लिया है पेविलियन की तरफ। एक बड़ी विकेट हो सकती है। जी हाँ, उन्होंने खुद को आधा आउट दे दिया और जिस तरह फील्डर्स को शेम लगता है कि काम तमाम है, और ये अच्छे खासे फासले से हुआ। हालांकि देख भी नहीं रहे थे फ़हीम अशरफ, लेकिन जानते थे, आवाज़ उनने पहले ही सुन ली थी। डेथ रैटल। सेंचुरी मुकम्मल हुई, साथ साथ फ़हीम अशरफ की ये इनिंग्स भी। 1 रन बनाकर रन आउट हुए। आज जो है रनिंग में मसाइल हुए हैं एंग्रो डॉल्फिन्स के खिलाड़ियों के दरमियान, हमआहंगी का फुकदान रहा है। 100 पे 6। अच्छी बैटिंग की थी गुज़श्ता मैच में शायान शेख ने। ज़्यादा डीप एंड पर आए थे उस दिन। 5 मैचेस में 24 रन, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। अच्छा ओवर। टीम की जो बालादस्ती है वो निसार ने बरकरार रखी डॉल्फिन्स पर। यूएमटी मार्कोर्स की 100 पर 6। आज इस पिच पर को खातिर खा घास नहीं थी, लेकिन मदद मिली है यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों का मॉइस्चर था, उससे सब पहले विकेटें गिरी। और अब सुलेमान जो हैं ये मुजाहमत करने चले हैं। अच्छा पंच किया उन्होंने, मिड ऑफ को आसानी मात दिया। भले ही पिछले ओवर में 2 विकेट्स गिरी हों, लेकिन यहाँ पे अगर आपके जोन में है, अगर एरिया में है, ये जो मॉडर्न डे बैटर्स हैं ये आपको नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही शानदार बैलेंस, हाई लेफ्ट, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी इंटेंट दिखाई सुलेमान ने। तो दिखाया कि वो इस नंबर पे या किसी भी नंबर पे आप इनको बैटिंग कराइए, ये अच्छा खेलेंगे। लॉन्ग ऑन पीछे जाने को कहा गया, तो अब जब ये फुल लेंथ आएंगे तो स्टंप्स की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि मिड ऑफ अभी भी आगे है। पॉइंट पीछे है, स्क्वायर लेग पीछे है, लॉन्ग लेग भी। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा सलमान में ये सलाहियत है कि अगले कदम पर और पिछले कदम पर भी अपनी महारत दिखा सकें। यही खूबी होती है एक अच्छे बैट्समैन की। यार फील्डिंग की अगर बात करें तो मिला जुला रुझान रहा है यूएमटी मार्कोर्स का। ये कमाल की फील्डिंग की, जहां 4 कैचेस छूटे, 1 रन आउट भी मिस हुआ, वहां पे कुछ बाकमाल फील्डिंग की कोशिश भी हमने देखी। उनमें से एक ये थी, डायरेक्ट हिट लगा के रन आउट किया फ़हीम को। और इससे देर से खेला, बहुत ज़्यादा फाइन चले गए।
इसके बावजूद दूसरा रन वहाँ लेने नहीं दिया। अब्दुल समद ने अच्छी पेशबीनी यहाँ पर दिखाई, जल्दी मुड़े, अच्छे क्रिकेटर हैं उभरते हुए अब्दुल समद। और ये हमने देखा जब वनडे चैंपियंस कप हो रहा था कि वो क्या कर सकते हैं, बहुत तगड़े हैं, लंबी हिट मारते हैं, लेकिन इस वक्त जो नजरें होंगी वो मोहम्मद सुलेमान की तरफ होंगी, क्योंकि अच्छा आगाज किया है। यहाँ पे फिनिश इस इनिंग को अच्छा करना होगा, उसके लिए सुलेमान का रहना जरूरी है। गेंद को नरम हाथों से खेला, 1 रन का और इजाफा होगा। आज खासी लंबी बैटिंग लाइनअप थी इनकी। फ़हीम अशरफ 6 नंबर पर आए, उसके बाद शायान शेख बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। रावलपिंडी में एक रोशन दिन है इस मौसम में सरमा का। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की इस वेन्यू को सेमीफाइनल की मेज़बानी करना है, और यहाँ विकेट मिल गई। शायान शेख जो हैं उनको सामने से बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिला, उन्हें वापस भेजा गया सुलेमान की जानिब से, लेकिन वापसी का रास्ता छोड़ा नहीं था। वहाँ अफरीदी थे, यहाँ सरवर अफरीदी की जानदार शो ऑन टारगेट थी, और काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे जब सुलेमान ने उनको मना किया कि ये रन नहीं है, क्योंकि आप आखिरी ओवर्स को चल रहे हैं तो रन्स तो चाहिए। 1 रन ही बना सके शायान शेख, 107 पे 7। सामीन गुल आज 4 पेस बॉलर्स हिस्सा हैं एंग्रो डॉल्फिन्स का, ये उन्हीं में से एक हैं। पिछले मैच में ज़्यादा विकेटें नहीं मिली थी। इस पेस अटैक को सलमान इरशाद ने 2 खिलाड़ी आउट किए, बाकी सभी खाली हाथ गए थे इनके, लेकिन उससे पहले कुछ रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें मुकाबला करना है। एक और शानदार ओवर जिसमें विकेट भी मिली, ज्यादा बाउंड्रीज भी नहीं आई। अच्छी वापसी इमरान जूनियर की, 107 पर 7। Well, Engro Dolphins, look at that. They themselves are responsible for this collapse. At one time, you can see those high buildings. This first over when there was a jitter, and after that, 63-run partnership. And by the end, consecutive loss of wickets have put them in this position. But you also have to give credit to UMT Markhors. Their fielding, they have stepped up as a fielding unit, and also the bowlers, especially the spinners. Yes, initially a good partnership after the fall of the first wicket. This is the throw. He had one stump to aim at and he hit bullseye. Just have a look at this. Wow. And batter always feels unlucky in such sort of run-outs. So 49 for 1, and they have now come to 107 for 7, courtesy some good bowling from the spinners, tight lines from the bowlers. Nisar in this tournament so far, he's been brilliant. He's into his 3rd over, only given away 9 runs and picked up 1 wicket. Trying to ramp it over short fine. You might say that the reason why Engro now are in trouble is
wrong shot selection and also poor running between the wickets. It's not about how fast you are between the wickets, but more importantly, how good of a judge you are of a run. Yes, exactly. Communication and decision making are the two key factors while you run between the wickets, and they certainly haven't been up to the mark. They were given a few chances, but they haven't been able to capitalize on them. 2 catches were dropped earlier on when it was the first power play, and the UMT Markhors, after the power play, it's been all them. They've come in, bowled economically, picked up wickets, taken their catches, hit the stumps directly. So after the first power play, UMT Markhors have turned around in every aspect of the game. They've been better than the Engro Dolphins. And earlier in the pitch report, we spoke about the hard lengths and the importance of the bowlers utilizing that particular area. And we have seen that the batters, they haven't been comfortable against the ball that has been pitching just a touch short of length. And we do not see so far any remedy coming up from the batters regarding that length. It's a struggle against the balls that are shorter in length. And that is, I think, an area where the batters need to improve in the coming days. Just keeping things tight. Nisar looking for the second one. There was slight hesitation, but no worries. We've seen a couple of catches go down, some run-out options being missed. But as a unit, UMT Markhors have stood up. They're struggling clearly, Engro Dolphins now. Yes, Tahir Beg, after settling in against the spin, he looked out of sorts. Then there was a great catch taken on the boundary by Saad. And that was Ikhlaq, another set batter going out for 40 runs. As this one is another chance, but this time the fielder, well, he makes a mistake. He doesn't collect the ball. Lucky for the batter, as 17 overs are now bowled, and Engro Dolphins are reeling on 111 for 7. Bowling change. Left arm down. That partnership between Tahir and Ikhlaq, that's the one that stood out. 29 from Tahir, Ikhlaq scoring 40. But afterwards, there was a collapse and a big one, and they are responsible. Suleiman and Samin out in the middle. Just to give you a clear idea what the collapse was. Just nudge around. Will try to push for the second one. Yeah, comfortably done that. Well, they lost 6 wickets and scored 44 runs just in 39 deliveries. Yes, and they were experienced players. You expect far better from them. Talk about Umar Amin, talk about Fahim Ashraf coming in, Qasim Akram since 2019, since he started playing for Central Punjab. He has been around in every premier competition, whether it be domestic, touring Shaheens, touring with the A-sides. You expect these boys to come up and win matches and take their teams out of problems. But that is something which doesn't happen too frequently. Another couple to the total, Samin Gul. Well, as bowlers, they will try to get to something that they can bowl at, but at the moment, the total isn't looking very impressive. Akif earlier on bowled with good pace. He's conceded 29, picked up a wicket, and he's bowling his last over. Oh, it hurried on to him with some bounce and pace. Too good for Samin. Yeah, well,
the batters haven't looked at home against this length, and these are the fast bowlers. And certainly, this is good bounce and good pace in the Pindi pitch. So you got to appreciate the groundsmen. They've done a fantastic job. It has something for everyone. Spinners who have bowled well have got good results. Batters who have played well, and fast bowlers as well. Oh, wow. Cleaned him up. Right into the block hole. Trying to charge Sameen Gul. But Akif, he's a wise operator there. The woodwork has been disturbed, and another one down for Engro Dolphins. Yes, the bat coming out of the hands, and Akif just cleaning up. Have a look at this. Sameen Gul wanted to hit the ball somewhere close to KP, but in the end, the bat disappeared, and he will also have to disappear. 7 he got, and now it's 8 for 115. Kashif Ali now walks in all sorts of trouble. The Engro Dolphins just 115, 8 already down. They had the momentum at one time, but now losing all cards there. Akif to continue. No, edged. He'll take it. Well, this is something you call an educated edge. Goes in the gap and gets the boundary. Runs very valuable for the team. They need more of that. It's Kashif Ali who's come in, and straight away the edge goes down to the third. No chance for the fielder in the deep. It was traveling quickly, and Engro Dolphins, they would love to get to 140 plus at least from this position, but it's not going to be easy. Wow. There's no run taken. The ball has traveled to the third, who's come in from the boundary, and the batter on the other end, Suleiman, has denied the single to Kashif. Well, Suleiman has the strike. 18 gone, 119 for 8. We've got some good crowd coming in, watching their favorite cricketers in action. It's a sunny afternoon, lovely. Well, this is one thing to look forward to, Barrier Town Properties. They go global, and Barrier Town Properties are to develop a world-class gated community in Dubai South. Oh, picked up. Got the elevation, but where is it going? Straight into the hands. Another well-judged catch, and another one gone down for Dolphins. Yes, for a moment we thought this might clear the fielder, but it didn't happen in the end. In the end, it's an easy take and some headache for the mentor sitting on your screens. He doesn't like it. Despite getting so many chances earlier on, the batters in the end have put up a disappointing show. Just a front foot check, which is very much correct, and Fakhr Zaman was underneath the ball, and he's the usual himself, very calm, takes an easy catch as Suleiman goes for 9 of 11, 9 for 119.
Well, you have to give credit to UMT Markhors, especially the spinners. They stood up, and now at the death, the fast bowlers are doing their work. Akif and Imran Jr. A single stolen. Suleiman just trying to go big. Denied Kashif. Single at the previous over, and now this time just trying to go big. Couldn't really get the connection. Yes, the batting effort has gone down the drain. One moment it looked as if they will go beyond 160, but then wickets started to fall. Again, well bowled. Impressive fast bowling from all the UMT Markhor fast bowlers today. They've hit the hard lengths on a pretty consistent basis, and they've also got movement, sideways movement from the pitch. And this might be an encouraging sign for the opposition, which is the Dolphins. But then you got to have some runs to bowl at. At the moment, it's only 1-2-0. Looking for that Yorker. Straight to Iftikhar's skipper. Second one denied. Well, UMT as a fielding unit, yes, they gave a couple of chances, not couple actually, 3 drop catches, 2 run-out chances were missed out. But then they pulled up their socks. And that's where you can see the character as a captain, as a team. It was hit hard from the bat, and also I think it's the knee area. Should be pushing for 2, but no, only single on offer. They've managed to pull things back, UMT Markhor. So 3 men on the boundary, on the leg side, 1 in the ring, that is the short fine leg. And on the offside, 3 men in the ring, mid-off up. Obviously, these are the tail enders. And once again, an edge goes to third. This time the fielder is there. And only 1. So 19 overs are bowled now. And Dolphins have 124 for 9. Well, it's all going in here at Rawalpindi Cricket Stadium. Engro Dolphins put to bat first. It's the last over. They've managed 123. Beaten, just trying to go down the ground, but was in no position, Kashif. Well, yes, one of the rare balls that were closer to the batter bowled by Nisar. He's 90% plus hitting the hard lengths. But now, as he knows that these are tail enders, so maybe he's just looking to finish it off by taking the wicket. But lucky for Kashif that the ball wasn't directed in the stumps. This time he's bowling full and fast. And just a run off the inside edge. So I wonder what the Dolphins would be thinking now, because for them, they would be needing to get all the wickets to win this game. There is no other way for them. The runs are not as much, and they'll have to do everything perfectly once they come in to field. So 4 balls remain. Salman Irshad swinging hard, but result the same, just the 1. Yeah, 4 changes were made today, including the captain Fahim Ashraf coming back, and you would expect a little bit more depth in their batting. Akhlaq again, yeah, he did score 40 odd runs, but apart from that, you've got huge names that you mentioned earlier on: Umar Amin, Qasim Akram. You've got Tahir Beg as well. This time, brute force. The boundary rider has to do some work and does well.
allowing no double runs from the boundary. That is also good fielding. Well, it's Fakhar Zaman, and we know that he's quick across the turf. So he made his ground quickly and didn't allow any chance for the batters to think about the second. So 2 balls remain. Dolphins would hope that the boundaries might come, but at the moment bowlers are bowling really well. No chance for these batters. Once again, just the leg by. So 1 ball to go, and it's 127. 9 wickets down on a bright and sunny afternoon, which you relate to a good batting surface, but really it's not been the surface, it's been the batters making a mess. Last ball, again some good pace behind that one. Right into the stumps, gave away nothing. Good over from Nisar. And that wraps up things for Engro Dolphins. Only managed to post 127. At one time it looked like they might be touching that 170, 180, but you have to give credit to UMT Markhors. They stood up, especially the spinners, and then delivering were the fast bowlers. He'll be a happy captain, Iftikhar Ahmed. But things are going to be very tight for Engro Dolphins. Well, yes, the UMT team, Markhors, would be very happy with their effort. Despite not being very efficient earlier on in the power play in the field, they have come back and they have restricted the Engro Dolphins to 128 for 9. So the target for them is to get to 129 inside the 20 overs in order to register more points. Engro Dolphins in the Barrier Town Champions Cup T20 game, this is their batting chart, and Farhan out for naught, Tahir 29 of 28, Ikhlaq 40 of 33. There was a bit of a partnership, but then they slowed down once the spinners came in. Umar Qasim Suleiman couldn't create any sort of impression, and Fahim was unluckily run out. And Shayan came in, he was another run out. Sameen, Kashif and Irshad, well, you don't expect much from these fast men. Well, you have to give credit to UMT Markhor bowlers. They have done tremendous job. Akif with 2 wickets, 1 each for Nisar and Imran Jr. and 3 for Nawaz. That was a turning point. Actually made Engro Dolphins collapse, giving away only 21 runs in the last 4 overs. Well, we've got Ali Yunus down at the boundary. Let's hear for him. जहाँ काफ़ी अरसे के बाद एक्शन में नज़र आया हमें 3 विकेट्स हासिल किए 28 रन देकर और रन स्कोरिंग को एक ब्रेक लगाया है। नवाज़ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शानदार स्पेल किया है जिन्होंने। नवाज़, सबसे पहले वेलकम बैक। अच्छे रिदम में नज़र आया, ऑफ सीज़न अच्छी ट्रेनिंग लग रही है। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग करता रहा हूँ और जो भी रिक्वायरमेंट्स थी इससे पहले 4 डे क्रिकेट हुई है, उसके 5 मैचेस खेला तो काफ़ी हेल्प हुई है और अपनी बिल्कुल यही कोशिश होती है कि जो काम है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए, उस पर मैं रोज़ काम करूँ। इस पिच के बारे में ज़रा बताइए, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी है, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा असिस्टेंस है, तो क्या आपके इरादे थे इस पिच के ऊपर बॉलिंग करने के एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर? टू बी ऑनेस्ट पहले यही था कि मतलब जिस तरह से स्पिन मिल रहा था माइंड में नहीं था कि ऐसे स्पिन मिलेगा, बट ये है कि पिच पिंडी का पिच है कि पेस और बाउंस होता है इसमें, और स्पिनर के लिए कभी कभी थोड़ी मुश्किल होती है बॉलिंग करना, बट ये है कि आज थोड़ा ग्रिप मिल रहा था जिसका एडवांटेज मैंने उठाया और डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स जो है नया बॉल थोड़ा सा क्रूशल होगा इस पर, तो होपफुली ये टारगेट इंशाल्लाह होना चाहिए। जब आप बॉलिंग करने आए थे तो 2 सेट बैटर्स बैटिंग करते हैं जो बड़ी हिट मारते हैं, तो क्या इरादा था किस एरिया में बॉल करना है इनको? मेरा यही था, हमने प्लान भी यही किया था कि इन दोनों के लिए जो है बॉल स्टम्प टू स्टम्प करना है। स्पेशली मेरा जो रोल है वो यही था कि स्टम्प टू स्टम्प बॉल करना है और कोशिश करने के बॉल फुलर पिच ना हो, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में एज ए स्पिनर आप फुलर पिच करते हैं तो फिर इजी होता है बैट्समैन के लिए हिट करना, और स्पेशली जो पहले ओवर में पहले ही 1-2 बॉल टर्न हो गए तो उससे काफ़ी मुझे एडवांटेज होगा, तो और बैट्समैन के माइंड में थोड़ा सा डाउट आ जाता है, तो आई थिंक उससे काफ़ी हेल्प मिली है। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक अगेन वंस अगेन। थैंक यू। Well, Engro Dolphins were put to bat first, Aizada Farhan and Tahir Beg. Well, Akif striking in the very first over, sending
Farhan back in the huts. But then the crucial partnership between Tahir Beg and Mohammad Ikhlaq that actually gave a lot of momentum to Engro Dolphins. They went for the boundaries, few chances given away from UMT Markhors fielders. This was a delightful shot to watch down the ground. Anything shorter, they managed to put it away in terms of boundary, and they did accelerate. This one, the breakthrough started with Nawaz. Big wicket, and then Mohammad Ikhlaq again just trying to accelerate, punch things down the ground. Another missed chance. Fielding was questionable. Umar Amin right into the blocks. He went for the big one, but again fell for the trap pretty quickly. Easy taken catch at the boundary. After that, UMT Markhors did pull their socks up in field and also in terms of bowling. But Engro Dolphins were in all sort of trouble. This was a slog sweep, but put in for no effect. After that, they did struggle, and very short intervals, the wickets kept on falling. No partnership was created. Some really good fielding from UMT Markhors. That was a great run out, just had to aim towards the single stump. This one, direct hit once again, causing more troubles for Engro Dolphins. In the end, the fast bowlers did stood up with Akif and Nisar, gave away no room whatsoever for them to accelerate. Fakhar Zaman with another easy catch, and they are pretty happy with how their team turned out. This is the target. Engro Dolphins will have to do some really great work in field and in bowling as well. UMT Markhors just need 129 runs to win. We'll take a short break. After that, we'll join you for the chase.
Yes, we're back at the Rawalpindi Cricket Stadium for the run chase. And the situation is that UMT Markhors require 129 runs to win off their 20 overs at 6.45 runs per over. Earlier, Engro Dolphins were off to a good start when the brakes were put on by the spinners. It was a good partnership between Mirza Tahir and Akhlaq. They looked positive, it had that attacking intent, but then came spinners and put the brake on the run scoring, and everything fell apart after that. Qasim, Sulaiman, Fahim all failing, and all they could manage was 128 in their allotted 20 overs. There was a wicket early on for their inning. It was Sabzada Farhan was the first one, unlucky one. It was there to be hit, but early into the shot, straight into the hands. There was a good partnership, and then spinners came and started taking wickets. This one being the first, Tahir Beg. Umar Amin looked to be positive and straight to the man at mid-wicket. Umar also, Akhlaq was the next one, again trying for the big one. This was a marvellous catch at the boundary line. Akhil Samar, it was Yes. a good show. Absolutely. The procession followed for them. Qasim Akram, who was trying to find his feet on the ground, never did that, and then hit the bullseye right on the top of the stumps, and that true and well compensated the lack of fielding in the previous part and backed it up with another great effort within the circle. So they came up to the ground and compensated with whatever was done, courtesy 3 drop catches. Fakhar Zaman was having those safe hands in the deep and no problem whatsoever for him. In that process, they dropped a couple of catches, especially the Lady Luck smile for Akhlaq, and courtesy that he's contributed with 40. Akif got a couple of wickets, and Nisar and Imran Jr. got a wicket apiece. But pick of the bowlers was well and truly Nawaz, who got 3 wickets with an economy of just 7 and an over. But the unsung hero was Saad, who broke the flow of the runs in the middle overs, although he was not able to get anything in the wickets column, but still it was well and enough to keep them within 130 runs mark. And early, looking at the way they have got the firepower, Fakhar Zaman himself, they also got Iftikhar in the batting lineup, and Khwaja Nafay, who came to the fore in the previous HPL PSL. It could be just a matter of maybe 14 or 15 overs. Fakhar Zaman, with all the experience in the world, more than 250 matches. Look at the strike rate approaching 140, 3 centuries in this T20 format and 45 50s with a good average of 28, which is good to talk about as far as the T20 cricket is concerned. And he was the next big thing, the youngest sensation in town in the HPL PSL. Still need to make a mark over here in Barrier Town Champion Cup. In 15 matches, he has amassed 195 runs, but the world is waiting for him. He could grab all the opportunities, and the experienced Amin Gul will start the proceedings from the pavilion end. Fairly experienced, more than 50 matches, and they will clearly need early breakthroughs in this innings. Yeah, there's a fielder at slip, point, cover, extra cover, but off in position. The 2 fielders outside are the fine and the third fielders, as UMT Markhors are all set to chase down 129. If they're successful, only time will tell. Early wickets is what Engro Dolphins would be looking and hoping from Samin Gul. He will be bowling to Fakhar Zaman. Edged and taken. What a catch! That is a sensational effort from Saibzada Farhan at slips. The sort of a start they were looking for, and they needed some inspiration early on. Saibzada Farhan, you've done a brilliant job in taking a big wicket. It's still there, still waiting for the umpire, who's going to have a look at it, is going to refer it to the third, if it was a neat catch or not. To me, it looked like a neat catch. Kaisar Wahid, the television umpire, who has been a busy man throughout this afternoon, will have a long look. Saibzada Farhan diving towards his right hand side. Everything perfect about that delivery just to start the proceedings. Going away from Fakhar Zaman, he was not able to close the face, and everything looks perfect. Diving towards it right, and the fingers are clearly beneath
and neatly underneath the ball. Should not be that kind of a problem. He has been in a lot of action throughout the afternoon, but this should be a straightforward decision, Ali. Absolutely. Sabzada Farhan, what a catch. It was dying on him. Had his fingers under. Espoused it well. They're all a happy bunch at the moment as they see OUT on the big screen. Fakhar Zaman, what a start for Dolphins. Big wicket without scoring. It's one down. Right, it's up to this youngster, Mohammad Shahzad. 79 runs at this level, 106 the strike rate. Still very young, just 20 years. Playing with the big boys, that's where the learning is. And that's what this tournament is all about, just to groom youngsters like Shahzad to play around and with the greats of Pakistan cricket. But Samin Gul, Akil, that's what the doctor ordered. Early wickets. Sensational start by Samin Gul. Still got a slip in place against the youngster Shahzad and got the packing on the offside and protection in 45 as well. So we'll see that how he's going to start the proceedings against him. He's kind of a bowler who likes to hit the deck hard and will invite Shahzad to go after him, especially through cut and pull shots in this relatively smaller ground in Rawalpindi. Interesting phase in this game already. Swing. That's nice, exciting. Samin Gul, we know that he's got a habit of swinging the ball early on. He surprised Fakhar Zaman with his length. We've seen bowlers bang it short, but this one was pitched up. He went for it, not quite using the feet. He doesn't usually does that. And that was a very, very good catch by Sabzada Farhan. Definitely, in order to defend a total which is less than 130, you will need early wickets and some strong captaincy. Fahim Ashraf is leading the side for the first time in this Barrier Town T20 Champion Cup. Still got a slip in place. Shahzad will need to have good going against Samin Gul and company. That's one way of doing it. That's smacked. What a shot. What a start by Shahzad. Wicket gone, but he doesn't care. The boy from Dera Ghazi Khan is off to a great start. Shimmy down the pitch and never mind. Whatever has gone, let be bygone be bygone. Use of feet, reaching to the pitch of the ball and making full use of his bottom hand. Playing over the head of that region towards mid-off and no stopping to that one. So finally first 4 runs for UMT Markhors, and Shahzad also off the mark. A youngster, just 20 years old, a product of the under-19 age group cricketer. Again, some swing in the air from Samin Gul. That's going to be a test of Shahzad. As you said, coming through the system, coming through the ranks, played under 16, under 19s, played for Southern Punjab, been part of for Multan Sultan in Pakistan Super League. He's here because of this, Akil. Definitely, Fakhar Zaman was trying to go big on the very first delivery, but was surprised by that length and always moving away from him. And on any other day, on any other occasion, when you are chasing anything which is less than 130, you should be taking it easy in the first few overs. We are talking about age group cricketer. Would like to ask the mandatory question to you. How do you see the Pakistan under-19 team and the overall regional teams which came through? Bangladesh was able to win in the final in Dubai. How are the teams coming through? Well, they've got some talent, Pakistan under-19 side. Ali Raza, the world knows about him now. But another fast bowler, Subhan from Sialkot, very impressive. Shahzeb, the opener, left-hand opener, scored a couple of centuries. And
Under 19 Asia Cup from Mansehra. So lots of good things, lots of good talent in that under 19 side. But at the moment, I'm excited about this pair, Shahzad and Nafay, two youngsters of Pakistan domestic circuit. One done, 6 for 1. Flags fluttering in Rawalpindi. Picture perfect afternoon. The breeze has picked up and the sunshine is looking lovely on these yellow stairs, and a sizable crowd finally coming in Rawalpindi. And here another local man would be starting the proceedings from the media center end. 3 wickets for him. Kashif Ali so far still asleep in place. Two different kind of a bowler. He's more rhythmic with a longer run up. Like to bring the ball into the right-handed batsman. He's flicked that one. And that's a great effort. Very good effort. And they come back for the second. That's good cricket. Good positive intent by Nafay and great fielding. At the boundary line is Sameen Gul. Just pulled it over. But the intent, Akil. Shahzad and Nafay, both youngsters. Although the wicket is down, but I think they have a plan that they're going to go after bowling. They've got a long way to go to chase anything which is less than 130, but after losing Fakhar Zaman, they could have some low time and bide their time towards that chase. So Khwaja Nafay got one big innings. He came to the fore in the HPL PSL. Shahzad also realizing that opportunity. Okay, so how is that turnaround? Did he ground it? A touch too casual from Shahzad. Boundary check. I think it's fair done. Runs given by the umpire. But yeah, we'll come back to that approach from Shahzad. Still waiting. Still waiting. What are they waiting for? Everyone is on their position. Runs away the umpire. Is not happy from something. Maybe still checking for that boundary or this. A bit casual, but he's done fine. Yeah, they're there. Just a gentle push or a gentle placement by the batter, but fair enough to call it a run. No problem whatsoever. Kashif to continue. He's a very good red ball bowler, Kashif Ali. You were mentioning earlier. These are early days for him as far as white ball is concerned. But he's a very good red ball bowler. We've seen him bowl. He's got that ability to reverse also. Good pace, good action as you said. Change in the field. Slip coming out, going to the mid-wicket position. Third is now quite finer because there are 2 fielders, deep square leg and fine leg in place as far as 2 fielders outside the circle is concerned. Oh, good delivery. Came in sharply. Hands on the head. Suggests that it was very close. Once again, almost getting him into half. Khwaja Nafay, who was trying to find his feet on the ground, but surprised by that relatively low bounce, but a sharp in-tipper. After pitching in, of course, Khwaja Nafay would be relying a lot more on his partner to have a good start, chasing down such a total and after losing his senior partner, Fakhar Zaman. Another quick single and good rotation of strike in the end. Yeah, you talked about Pakistani team, and Bangladesh in the end was able to have back-to-back victories in the Asia Under-19 Cup. So how do you see the rest of the teams coming through the ranks in this region? Yeah, I was really excited to see the new teams. Yes, we know about Bangladesh, defending champions, India, Pakistan. If there was a clean pickup, Akil, these things would have been interesting.
I was excited to see Japan team play their second under-19 Asia Cup. Nepal team also, they beat Afghanistan in one match. That was a great game of cricket. So lots of potential, lots of skill, and lots of potential here in these two, Shahzad and Nafay, two very exciting players, and it will be interesting how they approach to this run chase, because they've lost Fakhar Zaman, the senior member. So now it will be important that they steady the ship, build a partnership. And that must be some job to pronounce names of the Japanese team, all coming from the local areas and maybe sounding like an automotive brand. Tell me about it. You had to write them down first, but we got used to it. A couple of games. They had some very talented players too, and the best part about their cricket is there was no expat or local young boys from Japan playing the cricket for them. That's a big one. That's massive. That's into the stands from Nafay. We were talking about the excitement they bring to the table. Here's one. We'll have a look at it again. 2 done, 16 for 1. So finally, the first sixer came off the bat of Khwaja Nafay, who will always keep the spotlight on him. Shahzad also got one boundary so far. The earlier part of the innings is going to be crucial, otherwise the target is a modest one. It could become a bit dodgy if they could able to grasp a couple of more wickets, especially in the power play time. Down the track again. A few words from Sami. No fast bowler likes batter coming up or using the feet against them. But Nafay played a glorious shot again in the previous over. Yeah, stand and deliver, name of the game for Khwaja Nafay. Just shifting his weight a bit on his back foot and then bang. Look at the acoustic angle. It made a cracking sound off the bat and will give him tons of confidence. A bad delivery nonetheless by Kashif, overpitched, but he was waiting for that opportunity to pounce upon. 1 6 for Khwaja Nafay, 1 boundary for Shahzad. Don't do that. Don't do that early on in your inning. I know you're excited, but that's way too early to play a shot like this on a fast bowler who's got quality in him, who's swinging the ball. You got to value your wicket. You got to value the opportunity that has been provided to you. You don't want to be sitting in the dugout watching others score run because you've tried attempting shots like this. And this is where the role of the mentors is going to be even more instrumental, that how you are going to guide these younger ones, only 20 years of age. Obviously, the burden of expectations and the sense of excitement is with you. The match is being televised all over the world. You would like to make the headwaves. But this is where the responsibility should chip in. You can take it deep. The target is as easy as anything. 129 on this particular surface on a broad satellite should not be a matter of concern. And again, in the gap, by Khwaja Nafay, flat batted. This shot had more control than Shahzad attempted. Boundary. We talked about the automotives, and he is finally looking like a boundary machine. Slight bit of walk as if he's walking in F9 Park, and then bang. Clearly sensing the opportunity and anticipating that he would be pitching it outside the off stump and creating the full region towards the onside, wide open for him, and earn him the second boundary. That's better. Good cricket. That's a fast bowler, Kashif at third. Doing a good job, throwing around, good energy, good fitness.
Yeah, this is going to be a good contest, and we saw some blips in the field in the previous innings in the hands of UMT Markhors, but if you're defending such a modest total, this is going to be important. Throwing himself within the circle and saving almost a certain boundary here. Making few changes. There's a deep square leg in place. Third comes in. Sameen Gul didn't like Shahzad. He attempted the previous time he faced him. What is he going to get? A shorter one, a bouncer, or is it a double bluff? What is it? Slower one. Fielder, just falling short of Qasim Akram, and will go for a boundary. So at the moment, Shahzad is winning the battle. And this is not going to help their cause. Engro Dolphins, who are searching their first victory, and Qasim Akram is one of the best among the lot as far as the young fielders are concerned, making room for himself and creating that area wide open. He could not keep himself behind the ball, and in the end paid the price. Another boundary for UMT Markhors, and now easy going for this side. 22 for 1 already with a run rate of quarter and 8 runs in an over. This looks walk in the park for them. Down the track again. Fielder coming under, and he takes it. Another fantastic catch. It's the same fielder. Saibzada Farhan can do no wrong in the fielding. He is disappointed, trying to be too aggressive, too positive, and losing his wicket. A brilliant catch by Saibzada Farhan. The trajectory of the ball was having backdrop of the sun, but the shades did it for him, and always he kept the eyes on the ball. It was in the air for a long period of time, but he never lose the sight of the ball. Clear call also. He made it crystal clear that he was going after it, and in the end, smooth landing for Saibzada Farhan. Completed the catch in style, and the same combo got the second wicket. Shahzad departs. UMT Markhors in spot about the 26 for 2. So the contest is on in Rawalpindi, courtesy these two wickets, the same combo. The bowler Sameen Gul and the fielder first in the slips and then within the circle. Saibzada Farhan taking that catch, and out of that, the hero from Faisalabad is now out there to prove his prowess in T20 format. 9 games, 131 runs for him, also featured for Pakistan Shaheen squad in the Emerging Cup played in Oman. A different ball game. He will need to take it deep as long as possible. Oh, he was in business, Kashif Ali. He's bowling in the right areas, right channel. Great pace also. But what about the shot from Shahzad? It was a cutter into the pitch, slower one outside the off, and too far for him to fetch that one. Yes, there was a brilliant catch, but the shot selection, it's a question mark. You were talking earlier about these youngsters trying to make headlines, but that's not the way to do it. You still have to respect the fast bowler. Consistency, that's what you need. Oh wow, oh what a shot, what pickup. That's one for the stands. Makes it look ridiculously easy. Nafay, that's a fantastic one. They picked it up rapidly in excellent balance in the end, no problem whatsoever. Once again, making full use of the crease and the pace offered by Kashif, and it kept on flying outside the park. Khwaja Nafay is finally looking good for UMT Markhors, and good signs for the youngster also. Abdul Samad still to open his account. On the other end, must be feeling a lot more easier and taking Saif relief over there. Still power play overs continues and got protection in the long on. Both the fielders are in front of the square on the onside now.
What a skill. And again. And it's successful. Has it gone all the way? I guess it has. Back-to-back sixes, but still umpire is going to have a look at it again. He's going to refer it to the third, helping it on its way to that boundary. That is very, very smart from Nafay. Exciting. Khwaja Nafay now finally coming to the fore. The ball was outside the off stump and no risk involved in that shot. And once you have picked it, you've gone underneath it, then the rest is clearly going to be history. In the blink of an eye, he is in double figures, and UMT Markhors are finally dictating their terms, chasing this target, 129. They are very well on their way. Picked it up very quickly from sunshine to shadow. It is going all the way. So back-to-back sixes for UMT Markhors, and one-way traffic continues, courtesy this being piloted by Khwaja Nafay. 21 runs already for him, and now they are 38 for 2, so add a 6 to that. Whoa, whoa! Through extra cover this time. This boy is a Superman, can do nothing wrong. Just milking these fast bowlers all over the ground. Beautiful shot. Wow, the action time has arrived in Rawalpindi, courtesy this fireworks by Khwaja Nafay. Once again, in his zone, no problem whatsoever, and showing his skill towards the extra cover region. 6-6 and then a 4. 2 sixes behind the square on the onside, followed by that delightful stroke through the covers. Great going for Nafay and UMT Markhors. That's good. Smart, gentle. He's taken enough runs off the over just to create the strike. Very smart. But what a good over that has been for Markhors and Nafay. Surprised Kashif. Played those 2 sixes behind the square, and then that extra cover that shows that he's got the ability, the skill in him. He's like a Superman to me. He'll do things what no one can. It's brilliant. Great times ahead. This is exciting. Two very exciting players together. This is good cricket. A single to end the over. 4 gone. It's 44 for 2. उमर अमीन ने फैसला किया है कि समीन गुल के साथ ही वो जाएंगे। तीसरे ओवर में भी मुतवातिर समद उनके सामने हैं। अब्दुल समद को अब जो है वो मिडिल ऑर्डर का बराबर हिस्सा बनाया गया। पहले वाइट बॉल क्रिकेट में हम इनको नंबर 6, नंबर 7 की तरफ देखते थे, लेकिन वहाँ क्योंकि इफ्तिखार अहमद खुद मौजूद हैं, जिनको ये किरदार जो है वो सौंपा जाता रहा पाकिस्तान की टीमों के लिए भी, तो इसलिए अब्दुल समद जो है उनको ज़्यादा ओवर्स मिसबाह उल हक ने बैटिंग देने का जो फैसला किया है। और बोल्ड हो गए, और ये पोजीशन आज भी रास नहीं आई। ये चलते हुए शॉट खेला इनसाइड एज, और समीन गुल ने ये विकेट हासिल की। और ये आप देख सकते हैं ये शिकने आ गई हैं चेहरे पर।
टीम के मेंटर्स के भी, साथ साथ स्कोर बोर्ड पे भी अब 44 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। बहुत ही शानदार गेंद था ये समीन गुल का, अच्छी लेंथ को हिट किया था टॉप ऑफ ऑफ, और वो देखें बहुत ज़्यादा गैप था, हेड फॉल कर रहा था, बैट एंड पैड का गैप, और ऑन साइड पे खेलने चले गए। स्विंग था नहीं, सिर्फ अपनी लाइन पकड़ी थी गेंद ने, सीधा बल्ले से खेलते तो ये नुकसान ना उठाना पड़ता। अब तो समझ 1 रन बना के वापस 44 for 3। रावलपिंडी की पिच हमेशा से इम्तहान लेती है। जब यहाँ सर्दी आती है तो फास्ट बॉलर्स की जो खुशी है वो दोबाला हो जाती है। आज वैसा ही देखा है हमने। इस इनिंग्स में समीन गुल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, इसलिए इफ्तिखार अहमद जल्दी चले आए पावर प्ले में खेलने के लिए। 5000 से ज़्यादा रन्स हैं और इस वक्त सर्किट के शुएब मलिक के बाद ये सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक सर्किट के। अच्छा आगाज किया, उम्दा क्रिकेट। गेंद का जो डंक था वो फील्डर ने निकाला, उम्दा डाइव करके कवर पोजीशन पर। बॉटम हैंड बहुत ज़्यादा नज़र आया और ऑन साइड पे खेलने चले गए थे, हल्का सा आगे भी निकले थे, लेकिन लेंथ बहुत शानदार थी। आज इस इनिंग्स में मोहम्मद शहजाद और अब्दुल समद दोनों जिस तरह से आउट हुए हैं, ये को अच्छा नहीं लगता। ये नौजवान, ये जो नई जनरेशन है, और ये ख़राब क्रिकेट शॉट थे ये दोनों ही, और जाहिर है कि इनको मलाल इस पर रहना चाहिए। लेकिन इन दिनों होता क्या है, ये T10 T20 की बहुतात की वजह से कि वो जो बहुत बुरे शॉट्स होते हैं उन पे भी वो एहतसाब नहीं हो पाता बैट्समैन का। बिल्कुल, जिस तरह T20 क्रिकेट और हमें शॉर्टर फॉर्मेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स का ये ख्याल होता है कि सिर्फ पावर और अटैकिंग शॉट्स खेलना ही सब कुछ है। आप वो तब कर सकते हैं जब आपकी एक टेक्निक की फाउंडेशन सेट हो। अक्सर ये कहावत सुनने को मिलेगी, जो अच्छा डिफेंड करता है वो ही अच्छा अटैक कर पाता है। और शॉट बेहतरीन ख्वाजा नाफे की जानिब से, 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिले। आज इन्होंने लेग साइड में इससे पहले अच्छी हिटिंग की, लेकिन जो 2 कवर ड्राइव किए हैं वो काबिल दीद और काबिल सताइश। ये देखें, इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी। अगर आप ये शॉट देखें, तकरीबन हर चीज़ इस शॉट में परफेक्ट थी। हाई एल्बो थी, जो वेट ट्रांसफर था वो शानदार था, जो पाँव इन्होंने निकाला वो देखें शानदार। ये क्लासिक टेक्स्ट बुक शॉट है, और जिसकी टेक्निक अच्छी है वो ही इस चीज़ को अटैकिंग में भी ला सकता है। जहाँ फोटोग्राफर्स जो हैं उनकी चांदी हो जाती है ऐसे शॉट्स देखकर मैदान में। फिर से इसे निकाल दिया लॉन्ग लेग पर, अच्छी फील्डिंग। वहाँ पर मोहम्मद सुलेमान थे, उन्होंने गेंद को जा लिया। 2 रन का और इजाफा। लगता कि चोट आई है क्योंकि ये गिरे थे सीने के बल। 5 ओवर्स के बाद 51 पर 3। रन बनाए थे अपने पहले 6 ओवर्स में। आज यहाँ पर
एंग्रो डॉल्फिन्स ने, लेकिन यूएमटी मार्कोर्स की टीम पहले ही उनसे आगे निकल गई। अभी एक ओवर उनको मयस्सर है पावर प्ले का। मिसबाउल हक का एक जो बयान है ये हमारी नज़रों के सामने से गुजरा था टूर्नामेंट से पहले। उनका कहना था कि वो आज़ादी देना चाहते हैं अपने इन बल्लेबाजों को खेलने के लिए आज की ज़रूरतों के मुताबिक। लेकिन ये आज जिस तरह की बैटिंग देखने को मिली है इनके ड्रेसिंग रूम में ज़रूर इस पर बात होगी। मे भी कोई नज़रसानी करनी पड़े सोच के मामले में। मरीना, बिल्कुल, अगर आप इनकी लाइनअप देखें तो पोटेंशियल की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, लेकिन वही बात जो हम अक्सर करते हैं कि T20 में वन डायमेंशनल क्रिकेट आप ज़्यादा देर खेल नहीं सकते। और ये टेक्निक की जो मैं बात कर रही हूँ, जब आप एलीट लेवल पे देखते हैं और एलीट लेवल पे जब आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो टेक्निक होना आपके पास जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आप रिस्क फ्री क्रिकेट जो है वो आप उसमें आउट होने का रिस्क कम हो जाता है। और आई थिंक अभी यंगस्टर्स को ये समझना ज़रूरी है कि पहला स्टेप आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन है, अगला स्टेप उस फाउंडेशन को अटैकिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। चलते चले आए, लेकिन ये सही तरीका है। जब गेंद जो है आपके जोन में नहीं है तो फिर आप अपना बल्ला रोक लें, जो नाफे ने किया वो ये काम नहीं किया था अब्दुल समद ने। मिसबाउल हक पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर, सबसे कामयाब कप्तान, और इनके साथ एजाज जूनियर हैं जो हेड कोच हैं और वो भी माने हुए कोच हैं। एजाज जूनियर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, 90 की दहाई में खेले थे। और समीउल्लाह न्याजी जो हैं स्पेशलिस्ट हैं, बाएं हाथ के दो सीमर्स, इनके सेटअप में उनको फ़ायदा हो रहा होगा। यहाँ ओवर थ्रो का फ़ायदा हुआ नाफे को एक रन की सूरत में। बिल्कुल चुरा लिया ये रन, सीधा फील्डर के पास गया था शॉट थर्ड पे, लेकिन उन्होंने थ्रो की तो बैकअप के लिए कोई नहीं था, जिसकी वजह से रन्स मिल गए। लेकिन शानदार क्लीन इनिंग्स खेली है नाफे ने, अच्छे शॉट्स, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखने को मिले हमें। इनोवेशन भी नज़र आई, लेकिन उसके साथ साथ एक प्योर टेक्निक और एक प्योर क्लासिक बैटर वाली फील भी नज़र आई। एक रन जो है दस्तयाब है ऑफ साइड में, लेकिन गेंद में खासी बार थी। ये बाल बाल बचे फहीम अशरफ, ये बाउंड्री हो सकती थी क्योंकि फाइन लेग के खिलाड़ी आगे थे। समीउल्लाह न्याजी ये बहुत ही अच्छी स्विंग बॉलिंग किया करते थे, बदकिस्मती से अपनी कमर की तकलीफ की वजह से अपना इंटरनेशनल करियर आगे ना बढ़ा सके। इन्होंने खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज 2007-8 में। सरगोदा से ताल्लुक है कि मियाँ वाली सरगोदा आसपास हैं। मिसबाउल हक भी वहीं से खेलते रहे। एजाज जूनियर फैसलाबाद से आते हैं, तो ये शुरू से ही बहुत जानते हैं एक दूसरे में, इनका डोमेस्टिक ताल्लुक भी रहा है। ये पहले एक साथ खेलते थे, अब एक साथ कोचिंग करते हैं। और ये बहुत अच्छे जहन हैं ये तीनों ही। एजाज जूनियर का उनका बेपनाह तजुर्बा है, क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, उन्होंने क्लब क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। इसलिए जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं उनको इस सतह पर इससे बेहतर सीखने का मौका नहीं मिल सकता। मरीना, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह का ये बेंच है कोचेस का, मेरा ख्याल है कि ये एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा दस्तयाब है, क्वालिटी दस्तयाब है कि आप कोई भी इनसे सवाल करेंगे इनके पास उस चीज़ का उस जवाब होगा, हल होगा। 6 ओवरों के बाद 54 for 3।
यहाँ कुछ टोलियाँ आई हुई हैं हमारे बाएं जानिब यासिर अरफात इनक्लोजर में इस मैच से महसूस होने के लिए। लो स्कोरिंग ये मुकाबला, और अच्छा लगता है कभी कभार कि जो गेंद है वो बल्ले पर हावी रहे T20s में भी। मरीना, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरह UMT मारखोर ने कमबैक किया वो अच्छा किया। सलमान निशाद पूरी सलाहियत रखते हैं, ये भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं। रन स्कोरिंग इनके अगेंस्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन आज अगर नज़र डालें डॉल्फिन्स के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि उनका अपना कसूर था, क्योंकि जो शॉट सिलेक्शन थी वो उस पर काफ़ी सवाल उठ सकते हैं। अदरवाइज सरफेस ऐसी है कि यहाँ पे रन्स दस्तयाब हैं। अच्छा आगाज सलमान इरशाद की जानिब से। नाफे इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर नहीं खेल सके। साहबजादा फरहान ने आज बड़े अच्छे कैचेस दिए हैं दोनों। पहला स्लिप में था और उसके बाद एक बार फिर उन्हें गिरना पड़ा, लेकिन गेंद को उन्होंने नीचे नहीं लगने दिया। शहजाद को चलता किया और साथ साथ फ़खर जमान को। ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि एज अ बैटर अगर आप नहीं ज़्यादा रन्स कर पाते तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन होती है फील्ड में, लेकिन उसके बरक्स जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, जो टीम प्लेयर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया बैटिंग में तो मैं फील्डिंग में ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मेरी टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। और ये एक आला मिसाल है, अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शनल कैचेस करके वो वापस अपनी टीम को ऊपर ले आए थे। जी हाँ, इसलिए अगर आप एक ही डिसिप्लिन से आपकी वाबस्तगी है, आप सिर्फ बॉलर हैं या सिर्फ बल्लेबाज हैं, तो भी आप टीम के काम आ सकते हैं। उससे हट के भी इसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा मशवरा देकर, अच्छा कैच या रन आउट करके तो टीम मैन होना वो बहुत ज़रूरी है। आज ऐसा लगा डॉल्फिन्स को पिछला जो टूर्नामेंट था वहाँ फैसलाबाद में भी और उसके बाद यहाँ पर भी कि इस टीम को बिल्ड होने में शायद कुछ वक्त लगेगा। सरफराज अहमद इस बात के माहिर हैं, या वो पाकिस्तान के कप्तान बने थे तो बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग उन्होंने की थी। T20 की टीम आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर थी। चैंपियंस ट्रॉफी जीता पाकिस्तान सरफराज अहमद की कप्तानी में। लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ। तो वो जानते हैं कि एक टीम को किस तरह से उसवार किया जाता है। तो शायद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये टीम जो है ये हो जाएगी उसवार। ये नीलगू बुलंदियां हैं शुमाल की, अलमासी रंग आज भी छाया हुआ है रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहर में। आपकी जो ये डायरी है ना, ये मुझे चुरानी पड़ेगी क्योंकि कमाल अल्फाज लिखे होते हैं इसमें। ये इन्होंने तारिक भाई ने हाथ रख लिया ऊपर कि मैं चोरी ना कर सकूं। आप दिखा दें, सबको मालूम होना चाहिए। नाफे 42, 21 गेंदों में 200 का उनका स्ट्राइक रेट है। अच्छा शॉट खेला, पूरी तरह कंट्रोल में। नाफे तेज से पेशकदमी कर रहे हैं अपनी निस्फ सेंचुरी की जानिब। आज उन्होंने खुद को मनवाया है एक अच्छे T20 ओपनर के तौर पर। 3 विकेट पर 60 है इसको 7 ओवर्स के बाद। Change, left arm round.
ख्वाजा नाफे ने अपने सामने 3 विकेटें गिरने के बावजूद उन पर असर नहीं हुआ उस हालत का। बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। इस साल एक सेंचुरी बनाई थी शेखपुरा में कराची के लिए खेलते हुए कायदे आज़म ट्रॉफी के शुरू के दिनों में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से भी आपको एक जो बैटिंग में तवाज़ुन है वो लाने में मदद मिलती है। शाहजान शेख जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं, शुरू के दिन हैं इनके करियर में। इस्लामाबाद से इस साल खेले थे। फिंगर स्पिन करते हैं बाएं हाथ की। इफ्तिखार को पसंद है लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन। हमने पहली इनिंग्स में देखा कि नवाज ने जो 3 विकेटें हासिल की थी, बड़ी अच्छी नबीतुली बॉलिंग की थी, विकेट्स लेने में भी कामयाब रहे। वो एग्जांपल ज़रूर शयान के सामने होगी। गो के स्कोर जो है वो कम है, लेकिन फिलहाल मजीद प्रेशर डाल सकते हैं। आजा आजा आजा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। शानदार शॉट, नहायत आला छक्का, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, और शायान शान अंदाज में अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की ख्वाजा नाफे ने। आज वो अपने शॉट्स की रेंज दिखा रहे हैं पिंडी में। उम्दा बैटिंग नाफे की। बॉल फास्ट बॉलर्स को भी आड़े हाथों लिया और स्पिनर्स की बारी। रूम बनाया था, थोड़ा सा जानते थे कि शायद स्टंप्स को टारगेट करें, और उसी ट्रैप में शायान भी फॉल हुए। थ्रू द लाइन खेला, बहुत ही आला शॉट। अच्छी इनिंग्स अब तक खेली है, कहीं पर भी वापस से बाहर नहीं हुए। जब आपके पास इतने अच्छे स्ट्रोक हैं, आप उम्दा टाइमर हैं, तो ख्वाजा नाफे जो हैं अलग रन्स सामने कम है, उस वजह से भी ये आपकी सोच में एक तवाज़ुन आ जाता है। लेकिन फिर भी जब आप 1-2 छक्के लगातार लगा लें तो फिर आप ज़्यादा बालादस्त होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल 8 ओवरों के इख्तिताम पे 68 फॉर 3। Taking 3 wickets, and the rest of the bowlers have struggled wicketless. Kashif 2 for 28, he's been expensive. And spinner also Shayan starting off with 8 runs in his first over. 68 for 3 after 8. Salman Irshad, I think this is where the spell is going to be so important. Salman Irshad, he's got that X factor in him, he's got that sling in him. But he's up against somebody who's in tremendous touch, who's showing the skill, who's showing the class. Nafay at this very young age. So Salman Irshad against Nafay. It's going to be a good battle, I tell you. A batter who's brave, has a range of shots. But Iftikhar plays it straight to the hands. And someone who's very happy after watching the skill from Nafay Shahid is Mr. Butt, Salman Butt. A very good afternoon. Thank you, Ali. Good afternoon to you and to the people who are watching this game, this broadcast of Barrier Town Champions Cup T20 2024. And it's one of the most experienced batters with one of the brightest youngsters batting together. An ideal combo, and there are the coaches of UMT Markhors. Wonderful knock so far from Nafay. He's looked very elegant, very much at home.
And he's played well to the deliveries that have been short and also to the deliveries that have been full. And he's relied on good cricket shots with a mix of a few ramp shots off his hips and also some fancy shot making where he moved towards the offside and ramped it over the keeper and the fine leg in the circle. So a boy with lots of shots. Sliced away. And he runs well, comebacks for the second. So you've seen Nafay. I know it's too early days, just as first inning in this tournament. Shown his class, he's shown the range of shots that he has. But consistency, we all talk about. What can he do at this young age to be consistent and with that, continue playing the shots he does? Well, to have an opinion on that, I think we need to watch him in different conditions against different sets of bowlers with different skill sets and different surfaces, and then see what the outcomes are before getting too excited very early on, as you just mentioned. I think that is what we have been doing in the past few years. Watch a good youngster. But Sabir, what can Nafay do just to be consistent at this level? Well, he has to keep his hunger. He doesn't have to get satisfied with 1 or 2 knocks. He needs to know that that run scoring on consistent basis and finishing the games has to be his priority, and that is what Pakistan requires at the top level. This is once again bowled well, but is that an appeal? Have the bails come down? And it has been referred to the third now. And Iftikhar just pushing the ball and running along. He was on the back foot when he played that, and at times with the direct hits, they can surprise you. I tell you, Salman, maybe, just maybe, Dolphins have got a better case in that occasion because of the direct hit. That is going to be a huge wicket losing Iftikhar at this time. If they have, yes, I think he's struggling. He clearly is. He surely is. What a piece of fielding from Suleiman against the run of play. Iftikhar will have to walk back. That's a massive wicket. In the context of the game, that's OUT. They're 73 for 4 now. Yes, Iftikhar has to go. Strange decision. Only a few runs remaining to get, and you run for a run which was risky from the set-off. Nothing to take away from the brilliant fielding and the direct hit. And I think it was Salman, the fielder. Just have a look at this. As he plays the ball, he's inside his crease, so he's already late. And then this great fielding, and he hits one stump which was visible. Wonderful. And you can see him enjoy that run out. It's Sarwar Afridi now, along with Nafay, who has looked apart from all the batters who have played this game, from both sides. 26 games for Sarwar, 312 runs, an average of 18, which needs to go up. Decent strike rate though, 136, highest of 44. That is well bowled. Some turn over there. It was way outside the off stump, and Sarwar just hanging his bat and hoping for the ball to come in and hit the bat. Just have a look at this. There's a certain lack of technique that is pretty evident. And batters, they need to tighten up. It's just making sure. This is deferred to the third umpire because wicketkeeper did appeal for it. But Mohammad Nawaz at the interview mid-innings, he said there is grip and turn available. We'll have a
talk about that more. There's no problem at this end. And I don't think so. You can tell from this angle. Oh. I think his back is safe. But you surely cannot tell with umpire on the way. Yes, this is a much better angle, and really the foot has stayed where it was all the time. So just the keeping thing, this is very much associated with the keepers. Every time they, have a ball in the hands, they love to appeal, especially the ones who are not regular keepers. They get excited when they get hold of the ball. But Akhlaq considers himself a proper wicketkeeper now, not a non-regular one. You talk to him, every time he would say, I'm a proper wicketkeeper now. Because every side I play, they play me as a wicketkeeper. Yes, he's right in that regard, that whenever he plays for any team, he is on there with the wicket-keeping duties, and he has done reasonably well. But talk about regular keepers, they're a different breed. Their movements tell you that they're made for keeping. That's tickled for 4. He's bowled few good deliveries, but that's this time erring in his line. And Khwaja Nafay, the type of form he is in, is not going to miss out on this. Yes, Nafay is having a great time at the crease. This one was fired down the leg side, and all Nafay had to do was get some bat on it, and it will run to the boundary. This is much better from Shayan. You use the term, Salman, born wicket keepers. It always reminds me of Adnan Akmal. Just the wicket keeper he was. Such smooth, great glove work and footwork. This is wonderfully played, chipped over extra. This should fetch him 2 runs at least. Yes, it does. Easy couple. And yes, talk about keepers, their movements, sideways, front on, and the way they collect the ball, and they, just provide that extra cushion. As soon as the ball hits their hands, they just give it a bit of space to just sink into the hands. And that comes so naturally to those brilliant keepers. Talk about the greats, Wasim Bari, Rashid Latif, Moin Khan. Currently, you mentioned one of the greats, current greats, Adnan Akmal. We have a lot to talk about him. 10 done, 81 for 4.
And we are back from the drinks break, which is more of a rather a strategic break, because you see the mentors come in and advise their players of what next the strategy would be. UMT Markhors at the moment have all the good things coming from the star batter today, Nafay, 62 of 32, striking at almost 190, doing a great job. Apart from him, the others, Fakhr, Shahzad, Samad and Iftikhar, all didn't manage many runs. Altogether, scoring only 17. Sameen Gul, 3 overs, 23 for 3, was a star performer for Engro Dolphins. And along with him, Kashif, Fahim, Irshad, Shayan still to pick up a wicket. And they need to respond if Engro Dolphins have any chance of winning this game. Absolutely. I think Fahim Ashraf holds the key. His 3 overs will come very handy, will be vital for Engro. It's very impressive. He's valuing the wicket. Salman is valuing the opportunity that has been given to him. Wajan Nafay is not throwing it away, what Shahzad did early on. So if you're given the opportunity at this level, you have to make use of it. Well, this was a perfect opportunity. You were only chasing 129 runs. So rather bat in these conditions, because this tournament is going to be on for the next couple of weeks. So once you bat through, score some runs and bat 7 or 8 overs for the games to come in the future, you have a good idea of what to do in such conditions, which will actually get more cooler or remain the same. So that is where I think the batters, they did not visualize the games to come. They were only thinking this opportunity, and maybe they thought as if this was their only chance to show what they have. Absolutely. And talking about opportunities, here is an opportunity, because Barrier Town has gone global for opportunities to develop a world-class gated community in Dubai South. Amazing, isn't it? Yeah, we have a lot to talk about. The opportunities being provided to these youngsters and not capitalizing on it. Once they show the skill, they have the shots. It's the temperament maybe. Just can't happen that you come one day and start hitting every bowler out of the park. That's why Nafay has been different. He's picked, choose his delivery, which to hit, which bowler to attack. That is why he's still there, playing a vital role for his team. That's why he's put a smile on Salman Butt's face, looking a young player playing a proper cricketing shots. Yes, rarity these days. 46 required of 57 deliveries, less than run a ball. This time use of the feet and nice use of the wrist as well, just turning it towards the onside in the vacant space for a run. And now is the time that he can enjoy and play according to his will, and at the same time take his team across the line. This is a very concerned coach when there is nothing to be concerned about. Just roaming over there, maybe it's getting cold, so he decided to just walk a bit. Ijaz Bhai is one character. He's a sharp cricketing brain, a very good advisor, but a very funny man as well. But Salman, my question is, would he be happy for Nafay, who's played a good inning, or would he be sad or angry at Shahzad or Abdul Samad? So it's a bit of a mixed feeling as far as the batting coach is concerned. Well, yes, he'll be happy from one of the chaps and concerned about the rest of the 3 or 4 batters. But he's looking good in the red glasses. One of the very good players back in his days. Scored loads of runs for Faisalabad and for his department. I think it was Allied Bank that he played for. Once again, change of pace from Fahim Ashraf, and the batters just doing the necessary, taking the ones. 11 overs bowled and it's 85 for 4.
Right, a lovely afternoon here in Rawalpindi, and a good game in our hands too. 44 needed of 54 with 6 wickets in hand for UMT Markhors. All eyes at the moment are on Khwaja Nafay. It's his highest score at this level, 64. Remember, he scored 60 against Lahore Qalandars, playing for Quetta Gladiators in HBL PSL last year. In fact, this year, I mean, PSL is almost about to come. Oh, that's picked up beautifully. Oh, that surprised us all. The placement for Sarwar Afridi will earn him a boundary. That is a good shot. Yes, the important thing to note is how he created room and got into the position to get power in the stroke. Just have a look at it. Just opening up and freeing the path of the bat. And that is where he got his power and timing from. And this is good positioning to play a stroke. And single to follow. Good cricket this. He's a strong lad. Sarwar Afridi likes to go big. He's more of a 6-hitter. He's more of a finisher. But here's a different situation. Markhors flag flying high. Because they have a youngster who's playing a sensational inning. 65 at the moment. It's not easy when you have other people losing their wickets around you. Likes of Mohammad Shahzad, Fakhr Zaman, even Abdul Samad, Iftikhar Ahmed, the captain, keeping his cool. It's Sarwar again in the gap. He's finding the gap marvelously well. That's the second time in this over. He's paced 2 fielders to get a boundary. Yes, generally batters at times when they hit, they don't think much about the gaps. But this is good from Sarwar Afridi. He's picking his gaps very sensibly, using the spin of the ball, playing with the spin of the ball, and now he goes straighter. This time doesn't get the timing, so just the one for him as UMT Markhors moved to 96 at the end of 12 overs. बिल्कुल एकतरफा साबित हो रहा है ये मुकाबला। 33 रन दरकार हैं 48 गेंदों पर। 4 विकेटें ज़रूर खोई हैं यूएमटी मार्खोर्स ने। दरअसल किसी भी लम्हे ऐसा लगा नहीं कि वो इस रन चेज में किसी मुश्किल का शिकार होंगे। ये भी एक अच्छी पार्टनरशिप अब बन गई है सरवर और ख्वाजा नाफे के दरमियान। 23 रन सिर्फ 19 गेंदों पर। रन रेट का तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। विकेटें गिरने से बचाना था इन दोनों ने जब 73 पर चौथी विकेट गिरी थी। और अब पाकिस्तान के सिलेक्टर असद शफीक मैदान में मौजूद हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखने के लिए। ये शॉट खेला लेकिन सीधा ही हाथों में मार बैठे सरवर आफरीदी। वहां एक फील्डर था ताहिर बेग, उनने कैच आ लिया। और आज हमने शॉर्ट गेंदों पर जो है अक्सर बैट्समैनों को देखा है आउट होते हुए। सरवर आफरीदी को पुल करने की ख्वाहिश ले डूबी पिंडी की पेसी पिच पर। देखना होगा कि क्या गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी। ज़्यादातर बैटर्स का तो यही अंजाम हुआ, बड़ी शॉट खेलते हुए। इस मरतबा शायद बॉटम पर लगी। बॉल उतनी ऊंची आई नहीं जितनी तवक्को कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा दूर फेंक नहीं सके सरवर आफरीदी। 13 रन बनाकर आउट हुए। यूएमटी मार्खोर्स 56 पर 5।
यूएमटी मार्कोर्स का एक खाना जो खाली खाना था वो पूरा आज ज़रूर हुआ है टॉप ऑर्डर में ख्वाजा नाफे के रन्स की बदौलत, लेकिन उनके सामने इनकी जो बैटिंग है वो आज भी किसी हद तक हुई है रुस्वा। मोहम्मद शहजाद 11 रन बना सके, फ़खर जमान 0 पर गए, अब्दुल समद, इफ्तिखार अहमद वो भी जल्दी गए। 5 विकेटें इनकी गिरी हैं, पिछले मैच में भी 74 पर इन्होंने 5 विकेटें गंवाई थी। तो बैटिंग जो है बॉलिंग की निस्बत वो उस तरह से काम नहीं आई। बैटिंग लंबी है, मोहम्मद नवाज आए हैं खेलने 7 नंबर पर। यहाँ मजीद विकेटें खोना नहीं चाहेंगे मारखोर। अच्छा बाउंस सीधी जाकर ग्लव्स पर लगी, इसे फेंड किया वहां पर मोहम्मद नवाज ने, और उसके बाद दोनों के दरमियान एक दोस्ताना एक तबादला भी हुआ कुछ अल्फाज का। हाँ ये लगता ही है कि गेंद इनके ग्लव्स को लगने के बाद इनके हेलमेट की तरफ गई थी, इसलिए अंपायर बुलाना चाहते हैं फिजियो को। गेंद अंदर की जानिब आई और ये तो सरवर आफरीदी के आउट होने का मंजर है। टाइमिंग का इशू रहा है, बड़े शॉट्स खेलते हुए ज्यादातर बैटर्स को बल्ले के बीचों बीच गेंद लेने में नाकाम रहे हैं। कुछ बैटर्स के स्प्लाइस पे गेंद लगा और कुछ ज्यादा बाउंस की तवक्को कर बैठे, लेकिन यहाँ मोहम्मद नवाज ठीक ठाक होंगे। वहाब रियाज टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। इस पिच पर इनको बॉलिंग करना पसंद आता, जिस पेस के ये बॉलर थे। वहाब रियाज के अलावा और भी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। अजीम मिसबाउल हक, कसर शफीक को इससे पहले आपने देखा, पहले दिन यहाँ अजहर अली और हसन चीमा भी आए हुए थे जो नेशनल सेलेक्टर्स हैं। तो अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट में जो सेलेक्टर्स हैं, अगर वो मैदान में आकर किसी खिलाड़ी की कारकर्दगी देखते हैं महज स्कोर कार्ड देखने की बजाय, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कितने पानी में है, किस सूरत हाल में कौन क्या कर सकता है। डिफरेंट जाविये हैं जिससे देखा और परखा जा सकता है खिलाड़ियों को। नवाज ने 1 रन हासिल किया और 1 ही मिलेगा। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमेशा ये बात कही जाती है कि सेलेक्टर्स मैदान में आकर देखें खिलाड़ियों को, लेकिन वो भी तस्वीर की एक रुख देखने वाला अंदाज़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप ग्राउंड में आके देख सकते हैं, फिर कुछ आप टेलीविज़न पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से टेक्निक्स को ज़्यादा बेहतर जज कर सकते हैं। एक ओवरऑल पैकेज है, सेलेक्टर्स की जिम्मेदारियां जो हैं वो इतनी आसान नहीं हैं। जी हाँ, और इन दिनों जो सेलेक्टर्स हैं इनको हम वक्त मसरूफ़ रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो कौमी टीम है एक तो उसकी मसरूफियात पहले से ज़्यादा होती हैं, फॉर्मेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, फिर जो पाकिस्तान शहीन्स हैं और पाकिस्तान अंडर 19 टीम है, ज़ाहिर है उसकी अपनी मसरूफियात बढ़ गई हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स की भी ज़रूरत है और उन क्रिकेटर्स की निगरानी करने वालों की भी। जी बिल्कुल, ये एक एंगल है देखने का। फिर इसके बाद स्टेटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, वो सारी मालूमात भी एक पैकेज के तौर पे आपके पास होनी चाहिए एज ए सेलेक्टर। अच्छा स्टीयर किया 1 रन के लिए। ख्वाजा नाफे ने आज बड़ी ही दिलकश इनिंग्स खेली है, इंतहाई मुतासिर कुन लगे हैं। उन्होंने कतई स्लॉगिंग करने की कोशिश नहीं की। स्ट्राइक उन्हीं के पास रहेगा 98 पे 5। चला दे।
धूप है, इसलिए आप देख सकते हैं गर्म कपड़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ जो है ये धूप में भी आपको सर्दी लग सकती है, लेकिन शौक जो है उसमें कोई सर्द मेरी नहीं आती। ये कोई मौसम जो है ये उसका मरहूने मिन्नत नहीं है रावलपिंडी वालों का क्रिकेट के लिए शौक। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है कि 3 बजे के करीब और उसके फ़ौरन बाद जो है वो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है नीचे। ये सूरज की जो तमाज़त है ये भी गायब हो जाती है, इसलिए आपको कैप्स नज़र आ रही हैं क्राउड में, जैकेट्स नज़र आ रही हैं। कैप तो कमेंट्री बॉक्स में भी नज़र आ रही है तारिक भाई, लेकिन यहाँ जैकेट्स की और हुडीज़ की, अपर्स की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ जो स्पोर्ट्समैन हैं और जो मुख्तलिफ खेल हैं उनको सराहा जाता है। यहाँ स्क्वाश के भी बड़े परस्तार आपको मिलेंगे। ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इलाका है जहाँ पर एक ज़माने में सैफ गेम्स का भी इनेकाद हुआ था, वहीं अभी कुछ साल पहले की बात है वहाँ एशियन स्क्वाश चैम्पियनशिप हुई थी और बहुत बड़ी तादाद आती रही थी वहाँ तमाशाइयों की। हर दूसरे दिन हॉल जो है भरा रहता था। पेरिटाउन प्रॉपर्टीज अब जा रही हैं आलमी सतह पर और अब इन्होंने प्रॉपर्टीज डेवलप की हैं। वर्ल्ड क्लास गेटेड कम्युनिटी आपको मिलेगी जनूबी दुबई में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा स्टेप अप। पेरिया टाउन गोज ग्लोबल। ये आज सालगिरह किसकी? सालगिरह मालूम करना पड़ेगा, बड़ा तीजा जेब केक का डिजाइन है। ये अरे जीत के लिए रखा गया मार्कोस की जीत के लिए। एक बात यकीनी है, कमेंट्री बॉक्स में किसी की नहीं है। सालगिरह हमारे प्रोड्यूसर स्टैटिस्टिशियन से लेकर हमारे नए स्कोरर जो हैं अरसलान, आज हमारे साथ उनका पहला दिन है। बहुत ही हालांकि ज़्यादा बड़ा क्राउड नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आए हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, क्रिकेट को। और क्योंकि इन स्टैंड्स की एंट्री फ्री है, जो प्रीमियम स्टैंड्स हैं, यासिर अरफात इनक्लोजर, मीरा बख्श इनक्लोजर, टूर्नामेंट की स्टेज पर इनकी एंट्री फ्री है। शुएब अख्तर इनक्लोजर और सोहेल तनवीर इनक्लोजर्स में। ये बैरिया टाउन चैंपियंस कप रावलपिंडी की मेज़बानी सिपुर्द हुई इसकी, और आज इनके ज़रूर इनके जो फैंस हैं वो बढ़ेंगे ख्वाजा नाफे के, जिस तरह की ये इनिंग्स इन्होंने खेली है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो ख़ास तौर पर अगर आप स्टाइलिश हैं तो आप ज़्यादा लोगों को लाने का मैदान में बाइस बनते हैं, क्योंकि अक्सर जो तमाशाई होते हैं वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने आते हैं। कई बार ये टीमों से भी ज़्यादा शरह होती है, टीम सपोर्ट से भी, ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते में, क्योंकि टीम कल्चर डोमेस्टिक क्रिकेट में टीम्स बदलती रहती हैं। 100 रन मुकम्मल हो गए इस दौरान UMT मार्खोर्स के, लेकिन जो दिलकश अंदाज के प्लेयर्स होते हैं वो ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा क्राउड्स को। दूर मत जाइए, बाबर आजम की मिसाल हमारे सामने है। इस सीज़न के आगाज़ में जब हम फैसलाबाद में थे, जहां बाबर जाते थे मजमा लग जाता था। जी, उससे पहले मुझे सईद अनवर का याद है, अभी वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेले थे, जब वो डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए आते थे कराची से बाहर भी, तो लोग वो उस वक्त ही उनके अंदाज की शोहरत हो गई थी, लोग उनकी बैटिंग देखने वो पहुंच जाते थे। लाहौर में लॉरेंस गार्डन पर या LCC ग्राउंड पर, जहां आप ज़्यादा करीब आ सकते थे अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के। ख्वाजा नाफे ने एक बहुत ही एक मैच्योर बल्लेबाज की तरह उन्होंने बैटिंग की है। वो इस टूर्नामेंट में तो विकेटों के पीछे पाए गए हैं, लेकिन दरअसल वो एक बहुत बेहतरीन आउटफील्डर भी हैं। इसकी मिसाल हमने देखी थी PSL में भी, और
PSL में भी एक इनिंग्स खेली थी ख्वाजा नाफे ने। जो इस तरह की यंग बैटर का चैलेंज है वो कंसिस्टेंसी है। टूर्नामेंट के आगाज में अगर ऐसी इनिंग्स इन्होंने खेल दी है, अब नजरें मरकूज होंगी इन पर। यहाँ विकेटों के सामने आया पाए गए। जी हाँ, अंपायर देर से एक्शन में आए। ख्वाजा नाफे जो सीधे बल्ले से आज बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, इस बार उल्टे हाथ से उन्होंने शॉट खेला, लेकिन नाफे को बिल्कुल भी नफा नहीं हुआ इससे। घाटे का सौदा साबित हुआ और एक अच्छी इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। ये मॉडर्न डे बैटर्स के शॉट्स हैं, रिवर्स और स्विच हिट्स, लेकिन उसमें भी आपको वही बेसिक उसूल देखने पड़ते हैं। क्या ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लगी थी? इम्पैक्ट इमरान जावेद को ये फैसला करना था और उसमें उन्होंने टाइम काफ़ी लिया और बिलाखिर ये फैसला किया कि ख्वाजा नाफे आउट हैं। 68 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली नाफे ने। UMT मार्कोर्स 102 पे 6। पिछले मैच में ये मर्द मैदान थे और आज भी बॉलिंग के बाद बैटिंग का मौका जो है उस वक्त आया है जब टीम को ज़रूरत है रन्स की। साद मसूद अच्छा टेम्परामेंट दिखाया फील्डिंग में, बैटिंग, बॉलिंग में, और आज एक बार फिर मौका है कि नॉट आउट वापस जाएं। इनके पास भी मौका था नॉट आउट वापस जाने का। शायद इम्पैक्ट जो है उस पर ज़रूर सवाल था, इसलिए अंपायर ने फौरी फैसला नहीं दिया। बिल्कुल करीबी मामला था, लेकिन अब अंपायर का फैसला हतमी हो चुका, तो बहस बेसूद। लेकिन आप साथ की बात करें, एक नेचुरल क्रिकेटर लगे हैं, बैट बॉल और इन द फील्ड जिस तरह उन्होंने कैचिंग की आज दीप में। ये पाकिस्तान के अंडर 19 के फॉर्मर विकेट कीपर बैटर उमैर मसूद के भाई हैं। रावलपिंडी से ताल्लुक है इनका, साद मसूद का भी। अच्छा एक रन पिंच किया, बैकफुट पर खेले थे, इसी आखिर में तगदौ करना पड़ी नवाज को पहुंचने के लिए फार एंड पर। शायद ये वो सालगिरह है, ये किसी सहाफ़ी की है। जी हाँ, यहाँ आपको शकील खान नजर आ रहे हैं, जाहिद फारूक मलिक जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से, वो भी, और प्रेस बॉक्स में सालगिरह मनाई गई। हैप्पी बर्थडे का गीत तो नहीं गाते देख सके हम, लेकिन केक कटते जरूर देखा। जहाँ सेलेक्टर्स की तरह जो सहाफ़ी हैं उनका भी डोमेस्टिक मैचेस में होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी अच्छा लगा, ये मंजर भी अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे सहाफ़ी। ये शकील खान जो हैं ये पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जिनको आपने देखा ये फास्ट बॉलर हुआ करते थे। इन दिनों मीडियम मैनेजमेंट का हिस्सा है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी वाबस्तगी है। पुल शॉट खेला अगले कदम पर, उन्होंने इसे मिड विकेट को डिस्पैच किया और चौके के साथ आगाज किया अपनी बारी का। साथ में उन्होंने दिखाया कि कितना एतमाद है उनको अपने हाथों पर और ताकत पे। टैलेंट अपना पता खुद बता देती है, ज्यादा बयान की जरूरत नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने लेंथ को पिक किया बहुत जल्दी से। काशिफ भी रावलपिंडी के लिए खेलते हैं, दोनों का जरूर आमना सामना हुआ होगा लोकल क्रिकेट में। बिल्कुल ही पुरएतमाद तरीके से खेल रहे हैं साद इस टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट में इसी शॉट का फुकदान रहा है कि बल्लेबाज जो हैं
वो पुल शॉट महारत के साथ खेल सकें। इनकी बैटिंग सलाहियतें भी हैं, और अगर ये पटरी पर रहे अपनी फिटनेस, अपनी कारकर्दगी, संजीदगी के एतबार से, तो जाहिर है कि इनको मंजिल मिल सकती। जी, और मंजिल पाने के लिए टैलेंट उस बड़ी इक्वेशन का सिर्फ एक ही जुज है। टैलेंट के साथ डेडिकेशन, डिसिप्लिन, मेहनत और अपने पैर ज़मीन पर रखना। आजकल की सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह की हाइप एकदम से आपको मिलती है, ये भी एक चैलेंज होता है नौजवान के लिए। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से हसन नवाज, एक तो वो कंफर्टेबल लगे इस पिच पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पर, दूसरा साध है। उमर सिद्दीक ने अच्छी बैटिंग की थी इस खित्ते से। अब वो बल्लेबाज आने लगे हैं जो कि पेस बॉलिंग को अच्छा झेल सकें। शान मसूद ने यहाँ ज़्यादातर अपनी क्रिकेट खेली इसी इलाके में, वो बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं। जनरली जो पिंडी की क्रिकेट का कल्चर, बैटिंग कल्चर जो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बेहतर होना शुरू हुआ, वो जब ये स्टेडियम बना था, क्योंकि इससे पहले यहाँ स्पिनर्स का दौरा हुआ करता था। रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में तो अक्सर फर्स्ट क्लास मैच में 3 से 4 स्पिनर्स खेला करते थे और फास्ट बॉलर सिर्फ 1 या 2 ओवर्स करके गेंद को पुराना किया करते थे। इसी तरह बैटर्स की महारत भी ज्यादा स्पिन के खिलाफ थी। यहाँ एक रियाज नाम के बहुत ही मशहूर लेफ्ट आर्म स्पिनर गुजरे, ज़्यादातर बॉलिंग वही किया करते थे रावलपिंडी के मैचेस में। मोहम्मद रियाज एयरफोर्स से भी खेले, 110 पर 6। आज के दिन में एक इनिंग्स सेंचुरी बनाई है जो ख्वाजा नाफे ने बनाई। दूसरों से वो खासा मुख्तलिफ लगे। पहली इनिंग्स में एंग्रो डॉल्फिन्स के ताहिर बेग को भी अच्छा आगाज मिला था, लेकिन फिर बात जो है वो ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि 29-14 कई बार जो 40 हैं, ये भी आपकी टीम को कहीं लेकर नहीं जाते T20s में भी। आज की विकेट में टर्न भी है स्पिनर्स के लिए, बाउंस तो है ही है, एक मतलब फिर ग्लव्स पे जाके बॉल लगा साथ के। जिस तरह कल शोएब मलिक ने बॉलिंग की, एक टेम्पलेट उन्होंने बताया फिंगर स्पिनर्स को कि इस विकेट पे आपको ओवर स्पिन और साइड स्पिन का मिक्सचर किस तरह यहाँ पर लेकर आना है, किस पेस से बॉलिंग करनी है, और आज भी स्पिनर्स ने अच्छी बॉल की है। यहाँ कासिम अकरम ये भी अच्छा स्पेल कर रहे हैं, अभी तक अपनी टीम को एक उम्मीद दे रहे हैं इस स्पेल के जरिए। काफी देर से लाया गया। शाबाश शाबाश। और ये मैच जितना क्लोज चला गया है, इतना किसी स्टेज पे लगा नहीं, इतना करीबी ये मैच जा भी सकता है। यहाँ पे विकेट्स भी इक्वेशन में हैं और अब 18 रन रहते हैं 27 गेंदों पर, इसके बाद 4 ओवर्स बाकी हैं। यहाँ अगर एक आध विकेट और गिरती है इन दोनों सेट बैटर्स की, या इस्टेब्लिश जो बैटर्स हैं मुस्तनद बल्लेबाज, तो फिर मुश्किल हो सकती है। यहाँ 4 रन्स डाइव की थी बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने, उनकी कोशिश से खुश नहीं कासिम अकरम। कट शॉट खेल दिया, शायान थे फील्डर, नवाज मुंतजिर थे कि उन्हें लेंथ मैसर आए, इसलिए उन्होंने अपना वार किया ऑफ साइड में। लेंथ भी और विड्थ भी यहाँ पहले ही एंटिसिपेट नहीं कर पाया शायान, ज्यादा मूवमेंट किए बगैर गेंद की तरफ डाइव लगा दी, और जो स्पिन थी बॉल की बल्ले से लगने के बाद, वो बॉल को उनसे दूर लेती गई। अच्छी एंटिसिपेशन का मुजाहरा नहीं किया उन्होंने। ये दोनों टीमों का जो हाल है वो एक सा ही है, 99 दरअसल 100 पर 6 खिलाड़ी आउट थे।
एंग्रो डॉल्फिन्स के यूएमटी मार्कोर्स के 102 पर 6 खिलाड़ी आउट हुए। चल 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 चलो आजा आराम से आजा रन आउट अगर तो बैटिंग के एतबार से आज कुछ ज़्यादा खुशकुन दिन साबित हुआ नहीं है दोनों खिलाड़ियों की अक्सरियत के लिए। इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन मैसर आए यूएमटी मार्कोर्स को 116 पर 6। Well, yes, it's 116 for 6, 4 overs and another 13 required. But the batters in the previous few overs have made the game interesting. Just being not up to the mark. Apart from Nafay, the rest have been pretty disappointing. Markhors 116 for 6. They would have thought that with this kind of start they had, it should be a very easy walk in the park. But it has turned out differently. Starts with a wide. Salman Ashad. Yeah, at some point it seemed like Nafay and Nawaz, they should have continued the momentum and closed this game quite early rather than this, but they have somehow dragged it. The runs are not enough, but even now if another wicket falls down, things might get more interesting. 12 now just required. They've placed short fine leg now in circle. Push long on, long off. Yeah, that's the plan. Yorkers right in the block hole. And Salman Arshad is good at them. He can bowl Yorkers and be pretty consistent with them. Nawaz has looked out of sorts. The first delivery that he faced from Fahim Ashraf, the way that ball climbed up to hit his head, everybody was taken by surprise. And he hasn't looked alive to the occasion, just like laid back sort of a response from him. Normally he's a very good player, aggressive player. He has a lot of strokes and he is a very experienced campaigner. Saad, on the other hand, the youngster, he bowled well earlier and today with the bat he's looked pretty much at home, like an experienced player, just placing the ball, and his face shows no signs of any tension, but not the same story here at the moment. Jaz bhai, tense moments for him. Shouldn't be, but he'll have a thing or two to say to his batters today. Yeah, Saad with a brilliant catch as well. Now Salman would definitely like to repeat that Yorker delivery. Yeah, it's clipped up nicely, but again just for a single. We will talk about temperaments and all sort of things in T20 cricket, but it's also important to finish the game. Nafay was well settled in. At no moment it seemed like he's under pressure, he's out of time or out of touch. That's another thing where he should have carried the bat, and maybe the game would have been done by now. They're pushing for the second one. The fielder has to do a bit of work and misses it. They'll pick up a boundary. This was well timed from Nawaz. Just waited on it, let the ball come close to him, used the pace, hit it square off the wicket, and the fielder, well, he could have done a better job, but Samin, he wasn't able to stop this. Important 4 runs, and that will also settle some nerves in the camp of UMT Markhors, and also give some confidence to Nawaz to get his flow back. And again slams it, but straight to Samin Gul on this occasion.
It's a quick outfield. Whoever is patrolling the boundary, they need to get quickly out of the blocks to cover the line and cut the angles. Just a hit away now. A 6 would take them over the line. A 4 would equal the score. And touching distance now. So bowlers from Dolphins, they've done a pretty decent job. Made a match out of something which didn't look enough from the word go. And it's the batters really in this tournament who have to think about the game awareness. No, they're asking for it and given. Salman Ishad strikes straight, caught on crease. Saad. Well, the drama continues. Another one goes. Saad on this occasion, a Yorker. And a loud appeal, and the umpire responds in a positive manner for the fielding side. As 17 overs are completed, the front foot is way behind the line, so no problems over there. And just have a look at this front on. Wow. The batter, once he sees the replay, he might feel unlucky. The ball was tailing towards the leg stump, and there was quite a distance to travel. But all this is part of the game. Saad Masood, 9 he got of 8, and it's 7 for 124. One more down now for UMT Markhors. 5 needed. Shouldn't be a trouble. Qasim to continue. Nisar is the one who's joined Nawaz, who is on strike. Pick up a single. Salman Ishad, known for the Yorker slinging action. It's not always easy to put those away. Well, one more look at that Yorker, tailed in, and there's always difficult for any batter, whether you're set or new, this tailing in Yorker, especially from a bowler who bowls with a slinging action, they're always difficult. Nisar, is he going to hit one out of the park and finish this? And ask the batters what the whole drama was about. In fact, there's more drama. He's cleaned up, bowled. Classic off-spinning dismissal this. Between the bat and the gap. Bat and the pad. And Qasim Akram this time. 8th wicket falls. Through the defenses. Qasim Akram, he's delighted. More worries for UMT Markhors now. Nisar gone without disturbing the scorers. And we look at that. Qasim is a good action. Huge bat and pad gap, and that's where Qasim actually exploited that delivery. Gone or not, Nisar. UMT Markhors 8 down on 125. Akif Javed has now joined Nawaz in the middle. I don't think he was expecting this, but this is the game of cricket, especially T20. Just 4 required, 1 hit away, but Qasim Akram, with a peach of a delivery, sent Nisar back into the huts. 1 good shot for Markhors and 2 good deliveries for Engro Dolphins. Let's see what happens first, because that indeed would decide the fate of the game.
which has been very closely fought, courtesy batters. Oh, no footwork whatsoever. Got away with it, Akif. That was a close one. Again, the length just tailing in. Huge bat and pad gap. And he's targeting the stumps for sure. They don't look comfortable at all. Akif not coming onto the front foot. This is the one. Through the defenses. There was a huge gap there. And that's poor from Nisar. Well, I wonder what the surprise was for the batter, because the off spinner is definitely going to turn in. Nawaz would be praying on the other end that somehow these deliveries do not take another wicket. Just one now left in this over. And then Nawaz, I think, should keep the strike to himself. I think that's exactly what he's communicating to him. Three still patrolling the leg side. Long off as well. Quicker through the air. 18 bowled. It's 125 for 8 for UMT Markhors. Well, it all comes down to this. 4 required. UMT Markhors have put themselves in this sort of position. It wasn't required. But Engro Dolphins, they're fighting their way back. Nawaz on strike now. Should be looking to finish it in this game. Salman Irshad to continue. They've got a lot of protection, trying to save the boundary. However, the pressure is on the batter. But for Nawaz, probably that's the plan. Yorker, had he edged it? They're asking for it. There was a definite sound. But I think it was just the bat hitting the ground. Well, Nawaz living dangerously. It was once again a good Yorker from Salman Irshad. Tailed away this time. And Nawaz, well, he did look back, but that may be an instinctive reaction, because he was looking to guide the ball towards the third, because there is nothing much that you can do to such a Yorker. Nawaz needs to wake up. Still happy to take the one and expose Akif to Salman Irshad, who bowls perfect Yorkers. Now, if this ball gets the wicket, then everybody is going to have a lot of questions to ask to Nawaz. What about the game awareness? Yes, that's true. He wasn't comfortable against Qasim Akram. Salman Irshad, he likes to nail those Yorkers. Slinging ones, not easy. Tight ring on the offside. Fielders need to come up. This is why I said fielders need to come up. You need Akif on strike for your bowler to operate. He had 5 deliveries. So awareness is equal on both sides. Talk about the batting side or the bowling side. Yeah, probably thinking to save the boundary. But if you look at how Nawaz has played, even Akif is struggling. Nawaz also hasn't looked comfortable. Whenever it's pitched up, yeah, he can squeeze 1 or 2 boundaries. But otherwise, there was huge opportunity for Engro Dolphins to put pressure. They've brought that deep cover in circle now. Now, they've changed their mind. Now, Salman Irshad wants that cover back at the boundary.
Yes, some strange tactics there. Mid-on, mid-off up for Nawaz, and it was mid-on was back for Akif. And there's a chance for second run, but the fielder recovers quickly, and the throw is back. So once again, there are 2 balls, and there is 1 to equal, 1 to win. So 2 required for UMT Markhors, and now it's again Akif to face the heat. And now there is every reason to call fielders up in the circle. And still the square leg is back deep. Because Akif is not going to pull him. Even if he nails a perfect Yorker, there's no way he can hit him or dig it out of the ground or even for the boundary. Now everyone is coming up, trying to save the single. Clipped it over, short fine, bad line, just dragging down the leg side, and Akif helps it on its way to the way, and UMT Markhors at last registered their second victory. They've won by 2 wickets. Close call, but nonetheless they'll take it. Well, sometimes it is hard to comprehend how things turned out at the end. It shouldn't have gone this far, but it went. Courtesy some good bowling and some basic errors from the batters, making this game between Engro Dolphins and UMT Markhors interesting, which Markhors in the end wins by 2 wickets. And this Yorker attempted one, wasn't a perfect one, was on the legs and was flicked away, just avoiding the fielder for the relief of the camp of UMT Markhors, who have narrowly escaped and won this game in the end. Nawaz is extremely happy. Engro Dolphins, they started off well in the batting, then there was few jitters, managed to post just 128. UMT Markhor were totally opposite. They had the momentum, then at the end they gave it away, put themselves in trouble, but by the end it's the win that matters. Winning by 2 wickets, UMT Markhors. They'll have a breather now, but Engro Dolphins, especially regarding the batting, they'll have a lot to talk about. Both the teams and their batting coaches will have their work cut out. Pep talk, I think, or maybe some drills to follow, or some sort of a method to get the boys going, to get the boys thinking. That is where the problem is on the face of it. When you look at it, there are basic things that are not remembered at the precise times. UMT Markhors and their batting card, not for Fakhr. Nafay, the only batter who created impression, 68 of 41, a wonderful knock. Shahzad, Samad Iftikhar and Sarwar only managing together a total of 28 runs. And then 18 from Nawaz at the end, which was quite a sluggish one. Saad Nisar came in and went, and Akif came in and did the honours with the winning runs. Yeah, Engro Dolphins, they'll be quite delightful with the way they bowl, especially Sameen Gul with that new ball. Picked up 3 wickets, 1 each for Fahim and Salman Nishad, 2 for Qasim Akram. It was a smaller total, but they managed to put up a fight. So here it is. Engro Dolphins were put to bat first. They managed 128 courtesy, 40 from Akhlaq, 29 from Tahir and 14 from Qasim. Nawaz picking up 3-2 for Akif, but UMT Markhors turned up, made things a little difficult, but Nafay standing out on 68. Nawaz finishing the game with 18 not out, and they won by 2 wickets. UMT Markhors, congratulations for the second win. We'll take a short break and then join you afterwards.
1 check 1 2 3 हेलो हेलो check 1 2 check 1 2 3 ठीक है. स्टैंड बाय ड्रोन आ रहे हैं. नहीं, प्रेजेंटेशन के बाद आप उस पे आएंगे. ठीक है, सीधा फैसल आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, डायरेक्ट हम आ रहे हैं प्रेजेंटेशन पे. ठीक है, हाँ, वापस आपने कॉम बॉक्स पे थ्रो करना. ठीक है, चलो अली, मैं क्लॉक इन करने लगूँ. स्टैंड बाय येलो, रोल द क्लॉक. हाँ, 30 सेकंड क्लॉक ठीक है ना, बस. स्टैंड बाय फैसल. A nervy run chase saw UMT Markhors secure their second victory of the tournament with Engro Dolphins, all to do after 2 games. Welcome along to the post-match presentation ceremony. In the presentation party, I have Mr. Shahid Mahmood. He's the Director Sales, Barrier Town. Welcome along, sir. Thank you. And Mr. Shahid Mahmood will do the honors for the player of the match and for his fantastic 68 of just 41 balls. Khwaja Nafay is our player of the match today. He will receive a cash award of 25,000 rupees and a trophy from Mr. Shahid Mahmood. 4 fours and 4 sixes in his knock. Khwaja, सबसे पहले तो well played, बहुत अच्छा आप खेले. टूर्नामेंट के आगाज़ में ही, हालांकि दूसरा मैच था, काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है, एक अच्छी इनिंग्स लग गई शुरू में ही. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है. बिल्कुल प्लान था कि एग्रेसिव खेलेंगे और अल्लाह ने, मैंने जो प्लान बनाया उसमें मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी. और आखिर में काफ़ी नर्वी हो गया था रन चेस, क्या वजह बनी? बिल्कुल आपने देखा कि विकेट टू विकेट विकेट्स हमारी गिर रही थी जल्दी, तो मैंने थोड़ा सा ये किया कि मैच को थोड़ा लंबा करूं और मैच को अपने उस पे करें हम. और लंबा टूर्नामेंट है, इसी वेन्यू पे विकेट पे आपने काफ़ी टाइम गुजार लिया, बाकी मैचेस भी यही होंगे. कंडीशंस को कैसा पाया? बिल्कुल कंडीशंस आपके सामने. जो फर्स्ट मैच होता है उस पर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पिच थोड़ा फर्स्ट टाइम मुश्किल करता है, तो कोशिश रहेगी जो फर्स्ट मैच होगा उसमें थोड़ा ध्यान रखें. और एक आधी इनिंग्स अच्छे टूर्नामेंट में काफ़ी नहीं होती, अगर आपके जो है वो मंजिल काफ़ी ऊपर की जानिब है, तो बाकी टूर्नामेंट को कैसा आप देख रहे हैं? बिल्कुल अभी फ़िलहाल मेरा ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो मेरा फोकस सारा इस टूर्नामेंट पे. इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इसमें अच्छा परफॉर्म करे. आगे देखेंगे फिर. चलें, आज तो आप बहुत अच्छा खेले. वेरी वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. थैंक यू. Khwaja Nafay, the man of the match for today. We'll have a little word with Fahim Ashraf, the losing captain of Engro Dolphins. रन साहब, परफॉर्मेंस बैटिंग से तो अच्छी नहीं रही, लेकिन फाइट अच्छी की आखिर तक बॉल से. देखें जी, बैटिंग का ओवरऑल देखा जाए हमारी बैटिंग ठीक जा रही थी, लेकिन कुछ जगह थी जहाँ पे हमने कोलैप्स किया, जहाँ पे हमारे रन आउट हुए हैं, विकेट अर्ली चली गई. इस वजह से हमारी बैटिंग थोड़ी सी रन्स वैसे जो है वो बोर्ड पे लगा नहीं सकी. लेकिन ओवरऑल अगर एज अ टीम देखा जाए, हमारी टीम बैटिंग के बाद जैसे हमने लो स्कोरिंग टारगेट सेट किया था, लेकिन उसके बाद हमने जो फील्डिंग और बॉलिंग में एफर्ट किया ना, मैं कहता हूँ कि अच्छा साइन है हमारी टीम के लिए.
और टूर्नामेंट में जो आपकी टीम है उसमें काफ़ी यंगस्टर्स हैं, उन यंगस्टर्स को लीड करना बीइंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर आपके लिए भी एक अच्छा तजर्बा है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक अच्छा तजर्बा भी है और मैं कहता हूँ कि यंगस्टर जब आपकी टीम में होता है ना तो आपकी टीम बाकी टीम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी जो टीम की एनर्जी होती है ना वो ज़ाहिर सी बात है, जब यंगस्टर होंगे डिफरेंट होनी भी चाहिए और होगी भी, लेकिन एक ये होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जब वो उनकी एफर्ट होती है ना तो एफर्ट से जब आप चीज़ें सारी कवर कर रहे हो ना फील्डिंग में या बॉलिंग में, तो जो एंड पे आपके रिजल्ट हैं रिजल्ट अच्छे होते हैं। और बैटिंग में आगे चल के क्या डिफरेंट करना चाहेंगे, अप्रोच या इंटेंट जो भी कहें? देखिए इंटेंट तो आज के मैच में भी ठीक थी, लेकिन पिच पे डिपेंड करता है कि पिच कैसा बिहेव करता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम कर सकें इस टूर्नामेंट में। चलें आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आज आपने अच्छी फाइट की, हार्ड लक फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Fahim Ashraf, the losing captain, and now it's time to have a few words with Iftikhar Ahmed, skipper of UMT Markhors. मुबारक हो आपकी जीत के लिए। बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट था आपका बॉल के साथ, थोड़ी फील्ड में लैप्सेस हुई लेकिन आपने अच्छा रिकवर किया और 125 के टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। बिल्कुल, हमने फील्डिंग में मिस्टेक किए और मेरे ख्याल में जब आप डोमेस्टिक के ऐसे टॉप की क्रिकेट है तो इसमें ऐसी फील्डिंग नहीं होनी चाहिए और थोड़ा और भी बेहतर होनी चाहिए। और कंडीशंस आपने देखी, यहाँ पेस और बाउंस तो था ही, लेकिन स्पिनर्स भी पिछले 2 दिन से टूर्नामेंट में जो है वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, बॉल ग्रिप भी कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा है कल भी थोड़ा स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, आज भी हो रहा था। और जिस तरह बैटिंग चल रही थी किसी स्टेज पे लग नहीं रहा था कि मैच इतना क्लोज जाएगा, लेकिन आखिर में जो है वो काफ़ी क्लोज चला गया। उन लोगों ने बहुत अच्छी एफर्ट की, क्रेडिट जाता है उनको भी कि इस तरह इतने कम रन्स पे उसने इतनी एफर्ट की है। मगर मेरे ख्याल में ऐसे मैचेस अच्छे होते हैं कि इसमें आपको प्लेयर मिलते हैं कि यहाँ पे आपको देखते हैं कि जितना प्लेयर प्रेशर को हैंडल कर सकता है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा मैच था। और एज ए कैप्टन कुछ वरी होंगे कि दोनों मैचों में आपके जो पहले 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए 70-80 के अंदर? नहीं, ऐसा होता है कि T20 में आप हर टाइम रेडी होता है, क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसा है कि बैट्समैन रन्स के पीछे जाते हैं तो आउट ही होगा, तो एज ए बैट्समैन मैं बिल्कुल हर चीज़ के लिए रेडी होता हूँ। चलें, 2 मैचों में से 2 जीतें आपको मिल चुकी हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू जी। थैंक यू। That was skipper Iftikhar Ahmed from UMT Markhors, and that's all we have from down here. Well, that's how the day unfolded. Engro Dolphins were put to bat, managed to get 128. Ikhlaq scoring 40, Tahir 29, 3 for Nawaz and 2 for Atif. In reply, UMT Markhors, they won, well, somewhat convincingly by 2 wickets. Nafay was the standout, scoring 68 runs, and Nawaz with 18 not out. Don't go anywhere as Bahria Town Champions Cup T20 2024 continues. Tomorrow, we've got this match lined up where Nurpur Lions will take on Lake City Panthers at 12 o'clock in the afternoon. Don't go anywhere. The cricket and the action is still to continue. Goes past the outside edge immediately. Wrong line, but straight to the fielder. इस बार सिर्फ ऊंचा नहीं है, इस बार फासला भी है। और ये जाता है सात मसूद। Edge and taken. What a catch! Fielder coming under and he takes it. Oh, बोल लोग हैं। शानदार शॉट, काला छक्का और शायान शान अंदाज में अपनी निस्संजी मुकम्मल की। In fact, there's more drama. He's cleaned up. Clipped it over, short fine.